Okay, so let's start with the session. First of all, I would like to formally welcome each and everyone present in this meeting. So, I'll just give a brief introduction about what this 3-day workshop is about, right? So, we as Agri Yuva basically are trying to help students and people in this domain of agriculture to plan better and, overall perform better in their respective fields. We do that by providing information about say government jobs, private sector, and conducting webinars like this very one, so that we have more clarity about what we are doing in this domain, right? And this particular 3-day workshop is a very special one, because in general, agriculture as a domain is very special, right? What generally happens is agriculture in its own has a lot of potential, but what mostly happens is we don't have a lot of information to actually decide where we want to go and what we want to do, right? So this particular 3-day webinar we are having is going to give you a deeper perspective as to what you should do and how you should plan about your overall career into agriculture, right? For today, our first session is going to be on entrepreneurship and startup guide. So this is for basically people who are interested or have a keen eye about starting a business or knowing more about how a business works, right? Basically now, we have our guest with us, Mr. Abhijit Rathod, who is the Administrative Development Officer at AgriJoy. AgriJoy is basically a hydroponics farm located in Dehradun, Uttarakhand, and they are doing pretty well. And today we are going to learn with him on how this hydroponics farm actually functions and how they have created it into a business and how they are overall functioning. With this, you will be able to get a better idea of how they are performing as a business. And if you want to start a business, maybe a hydroponics farm, maybe another business of any kind, you will be able to have a better perspective overall on how to actually run a business or start a business, or overall the preparation needed to do something like this. So with this, I welcome Mr. Abhijit. Mr. Abhijit, how are you? Mr. Abhijit, can you hear me? Mr. Abhijit, I guess we can start now. Sir, your voice is not audible. Hello, is it now? Yes, sir. Actually, I'm facing some network issue over here. So thank you, Pankajji. Thank you, Anuja, for giving me the opportunity of introducing you guys regarding what exactly a hydroponic is. So before we proceed, I just want to know what will be your mode of communication, which will be more convenient for you, whether I should go with English or should we go with Hindi. You can simply use the chat box, so it will be more convenient. Everyone will be understanding. You guys can actually just type it in the chat whether you want it in English or Hindi.
So, Mr. That Abhijit, we sounds can good. do one. We can switch between English and Hindi Yeah. while whole presentation is going on. With that, also all the participants who are present in this meeting right now, I'll just establish one thing, that let's make it an interactive session, right? So overall, what we can do is you have the option to use emojis, right, and to raise your hand. So while the presentation is going on, you are most welcome to raise your hand and ask any kind of questions. You will be allowed to open your mic once you raise your hand, and you interact with Mr. Abhijit as well, so that we can have an interesting kind of interaction with everyone. Okay, so let's start. That sounds good. So today's session will be all about what exactly a hydroponics is, what are the different systems which are used and practiced on a commercial level, and most important, we will be discussing regarding what are the pros and cons of each and every system. Along with that, I will show you a few videographic representation too, so that you can understand every steps which falls under it. And later on, at the end, we will discuss regarding what are the financial aids we can get from the government, what are the benefits we can avail, like the AIF, NHB subsidies, all these parameters, entrepreneurship opportunities, like if you plan to set up your own industries of hydroponics. So what are the things you should take under consideration, and what will be the expense calculations, all this part. So I will just simply start with what is the today's workshop timeline. So as I briefed you regarding every parameter, we will be covering each and every step. And after every part, we will have a short break in which we will be going toward more Q&A part. So we can understand how many doubts you have and how all are communicating, right? So before we proceed, can anybody please let me know like what exactly a hydroponics is and what the plant actually requires to grow? I highly appreciate if you unmute your mic and answer it. So it will be more an interactive session. Nutrient through aeroponics. Yes, nutrient is required. Right. Also, few more components will be required, like sunlight will Mm, be required, water will be required, but it's not mandatorily to have soil for cultivation. yeah, So without in soil. yeah, exactly right. So in hydroponics, what we simply do, we simply utilize water, which will do all the work of delivering nutrient, right? So if we break this word into two half, as we all know, like hydro means water and ponics means to work, right? So if we move toward a scientific definition, so hydroponics is a branch of agriculture in which we deliver all the nutrient required for the plant to the grow for growth. We will deliver all the nutrient to the roots using water as a medium, and we will utilize different substrates. Okay. So I think we all know regarding what are the advantages and like why there is a new need of hydroponics. So I will just simply run through these slides. The very basic thing is that there is no any need of soil. So due to like heavy industrialization, we have figured out that the soil's fertility is degrading, and in fact it's not even in a 1 acre of patch also. Along with that, water bodies are getting contaminated. If we take the live example of Yamuna river in which is opposite to Akshardham in Delhi, right? So earlier it was kind of a tourist attraction, but now it's completely messed up, right? Along with that, currently farmers are facing lot of issues. I'm personally from Maharashtra, from a Yavatmal district, which is highly known for the farmer suicide ratios, right? So I have figured out personally that there are a lot of issues which farmers are facing, like the drought, unpredictable weather, all these things. Currently entire north is suffering through unpredictable flash floods, right? So there are a lot of issues, and all these issues can be solved by various different solutions. But if we utilize hydroponics, all these things can be solved in a one go. Also, we will be requiring only 1/5 to 1/10 of the water as compared to traditional farming. And the most important thing is in hydroponics, we will be steriling the substrates. Okay. Whereas in soil, like if we go for traditional agriculture, so there are really rare scenarios where we sterile the soil, and it will be extremely tough to sterile entire patch of the land. So if you have any doubts till this basics, do let me know. We'll work on it, and then we will discuss the types of hydroponic systems, crop which are feasible for it, and all different parameters.
How frequently we should replace the water used in the system? Okay, so Karanji, basically it completely depends on the system which we are using, right? If we are using any recirculating system, for an example, if we are using NFT and our area is around like 1,000 square meter and we have a tank capacity of 2,000 liter. So once we turn on or open the irrigations, so at that time, 50% of the water will be placed in a NFT channel itself and remaining 50 will be recirculating, right? But if we consider the cycle of leafy crops, it's hardly around like 40 days to 45 days, a complete cycle, whereas after 20 days, it will be placed on the NFT. So if we consider this only 20 days and considering the NFT systems, the water will be utilized by the plant within a day for 2,000 liter tanks. Whereas if we are planning for crop changing or crop alteration, so at that time we simply discard it. So usually this scenario falls only once per cycle. That is, once we are planning to change the cycle or planning to change the crop. Only at that time we need to discard the water. Whereas in day-to-day practices, the entire water which is blended with all the nutrient will be utilized by the plant itself. Whereas if we talk about, as Shantanu mentioned the question, the soil vegetable taste and hydroponic vegetable tastes are different. So exactly these tastes will be different. The reason is that this crop which is produced inside the soil or using a soil in open cultivation has faced lot of stress onto its particular fruiting phases or entire life cycle. Whereas the plant which are raised in hydroponics or controlled environment are similar to the BBs which are like grown in incubators. So they will have more, we can say, dominant, this hydroponic or controlled environment crops will have more dominant shape and texture as it was not suffered through any stress parameters. Whereas in soil, lot of stress will be there. So definitely there will be some change in amino acid synthesis of particular plants. So I think we are good to move toward this particular types of system part, type of hydroponic system. So the very first system on your screen is the NFT system. That is, I think most of us have observed this scenario that there are few plastic cube-like structures. I will show you exact farm how this thing will work. So there will be some plastic tube-like structures in which entire water will be recirculating. So that's nothing but an NFT. Right? So now I will simply help you with the working of this. So in this, there are few major components. That is this reservoir, or we can say it as a tank. Okay. In simple words, we can refer it as a tank. Also, just for understanding purpose, I have placed this tank just below the NFT, whereas it's not mandatory to place just below the NFT channels. We can simply place this nutrient tank at any corner of the farm and it will be integrated by the walls itself. Okay. So the working will be really simple. This blue color thing is a hydroponic nutrient. That is, it has all the macro and micronutrients inside it, filled inside it. So once the nutrient pump, or we can say it as a motor, is turned on, the nutrient will be delivered to one end of the NFT channel. Okay. And from opposite end, it will be again discarded back into the main tank. And this is how the recirculation will be there. It will be really great if you help me with a small question. That is, can anybody let me know why we haven't flooded this entire NFT channel with nutrient rather than just simply placing a film? I'll just repeat myself. जैसे कि आप ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, this NFT channel और grow tree we can say. So इसको हमने completely nutrient से fill नहीं किया या flood नहीं किया. हमने इसके नीचे में एक shallow thin layer form की, एक film form की. So what will be the reason behind it? कि हमने इसको shallow film क्यों रखा, एक completely flood क्यों नहीं किया? So the roots may reach there. Sorry, can you repeat? So the root of the plant may reach there. Okay, right. Actually what happens, जो plant के root है Sir, या may I? कोई भी plant है, yes, go ahead. Sir, maybe for uniform nutrient supply and to conserve water. Okay,
Right. So actually, it will conserve the water. But another thing is that कोई भी प्लांट रहे उसको हम न्यूट्रिएंट तो देंगे, बट अलोंग विद दैट उसे फ्रेश ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, राइट? अब सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो काइंड ऑफ एक पोरस टेक्सचर होता है, जिसके वजह से उसमें ऑक्सीजन का डिपोजिशन या फ्रेश एयर का फ्लो मेंटेन रहेगा। वेयरएज अगर हम एनएफटी में अगर फिल्म की जगह कंप्लीटली इसे फ्लड कर दे तो ये जो रूट्स है ये फ्रेश एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, due to which there will be lot of issues like root rot diseases will be definitely there. So to avoid that हम एक shallow film रखते हैं, so that कि roots उससे nutrient भी ले ले and around 70% of the roots portion will be exposed to the air, so that there will be fresh air along with all the nutrient. Also the crops which we can grow inside this NFT are only short cycle crops like green lettuce, red lettuce, romaine, kale, parsley, basil, or we can maximum go high up to like arugula, those kind of things. Okay. Also अगर हम इसमें large rooted crop लगाए जैसे चेरी टमाटो हो जाता है, सीडलेस cucumber हो जाता है, तो इसका रीजन ये है कि हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये जो NFT है यूजुअली 3 to 4 इंच का साइज होता है इसका. Okay, the size of this NFT will be 3 to 4 inch. Also, if we go for like sowing of any large rooted crops, so at that time क्या होगा, roots की development will be really vast, and due to which it will disrupt the recirculation. और recirculation को continue रखने के लिए somehow we need to cut off those roots, which will create some stress onto the plant. So that's why we ideally prefer only short cycle crops जो कि NFT में grow करने के लिए easy रहेगा. Whereas another thing is कि एक recirculating system है, तो इसमें एक cross contamination का risk आ जाता है. अगर मैं बेल पेपर, क्यूक्यूम्बर ऐसे क्रॉप्स करूं, सो इनका जो साइकिल है इट विल बी मिनिमम बेयर मिनिमम लाइक फॉर बेल पेपर इट विल बी 7 months मिनिमम एंड मैक्सिमम 9 month. ओके, सो अब 9 month के लिए अगर मेरा सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन सिस्टम पे है, सो एट दैट टाइम देयर आर हाई चांसेस कि मेरे फर्स्ट प्लांट को कोई वायरल अटैक आ जाए या कोई डिसीज आ जाए. सो ड्यू टू रिसर्कुलेशन एंड एंटायर रूट कॉन्टैक्ट क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर शॉर्ट साइकिल क्रॉप इनटू एनएफटी. Now we will move toward EBB and flow, which is another system, that is flood and drain system. इसमें भी हम medium to small rooted crops लगाएंगे. इसमें there are few major components. That is, the first one is this fill tray. This outer box you can see. This is the fill tray. These smaller box are nothing but a similar structure of, we can say, flower pots. Okay, a similar structure of a flower pot. Then this particular reservoir is there, and now another most important thing, that is a timer immerse pump is here. So अब इसमें क्या होगा, there will be two cases. The first case will be the nutrient will be traveling from this reservoir to the main tank. Okay, और जैसा आपको फोटो दिख रहा है, this is the scenario. Now the fresh air is less and nutrient is more. Okay, so at that time जो plant के roots है, it will be absorbing more nutrient as compared to fresh oxygen or air. Right, this is the first scenario. अब ये जो टाइमर इमर्स पंप है ये कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए चलता है, देन इट टर्न्स ऑफ, एंड वंस इट इज टर्न्ड ऑफ, ये जो ड्रेन ट्यूब है इट कम्स इनटू द एक्शन एंड इट विल सिंपली ड्रेन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट व्हिच इज अवेलेबल इनटू द फिल ट्रे एंड इट विल ड्रैग इट इनटू दिस रिजर्वोयर. ओके, नाउ एट दिस पॉइंट फ्रेश एयर विल बी मोर एंड न्यूट्रिएंट विल बी लेस. सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन विल बी मेंटेन्ड in this EBB and flow system. In this, usually basils are cultivated on larger scale, then lettuce family and romaine, bok choy, those families will be cultivated on larger scale. Now this is the most important thing and most widely used irrigation system on a commercial level. अगर हम इंडियन कंडीशंस की बात करें, दैट इज द पावर आउटेज सिनेरियो, इंडिया में कम से कम हमें लाइक विद इन अ वीक 3 घंटे 4 घंटे का पावर आउटेज तो बेयर मिनिमम मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट 70 to 80% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स जो है इंडिया में वो ट्रिपल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. सो एट दैट टाइम अगर कोई पेड़ गिर जाए या मॉनसून टाइम में देयर माइट बी सम इश्यूज, so due to that it will minimum take couple of days to restore a we can say triple phase electricity connection or power outage. So considering that scenarios and commercial viability, this drip irrigation method is used widely. अब इसमें क्या होता है कि I will show you exact video of this commercial form of drip irrigation. So in this there will be one tank, okay, which is a reservoir,
and we will blend all the nutrient inside it. So once we open these walls, the nutrient will be traveling to the main line and then it will be transmitted to this lateral line. Plus इसमें हम क्या करते हैं कि we will be installing some pressure control junctions, that is PCJ drippers. So what it will do, it will emit equal quantity of nutrient to each and every plant. And there is no any capping कि हम इसमें small rooted crop करें या large rooted crop करें. We can use simply different substrates like coco pit with perlite, right? We can use this coco pit like substrates and we can go for cultivation of a tiny plant like a broccoli, lettuce or herbs to the larger plant like seedless cucumber, cherry tomato, bell peppers, which goes high up to 15 feet also. And this is the another system, that is deep water culture, or we can say it as DWC. It is largely practiced in Gujarat location, specifically Kutch. So in that, one of my friend is there who is cultivating basil using this system. So now the system will be working on high electricity consumption. So the very first parameter involved in this is a air pump. Okay, एक air pump होगा, then there will be a air stone, a foam sheet and plants. Okay, now अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा air pump on होगा, once the system is on, the air pump will intake all the air which is present near to the farm or outside this air pump. Okay, and it will be transporting to this air stone via the air line. Okay, now this air line has some pores on a surface. This air stone has some pores on its surface. अब वो पोर से ना बबल्स ऊपर आते हैं पानी में, and due to that bubbles fresh oxygen deposit होगा into this entire nutrient solution. So yeah, इस way में the combination will be maintained of the fresh oxygen and nutrient. Also, can anybody help me with like why we have installed a foam sheet on the top of it? So the basic reason for this is कि जब भी sunlight available होती है and there is any stagnant water which is nutrient rich, okay, so in the presence of sunlight and nutrient there will be high growth of algae formation inside it. So to avoid direct contact of sunlight to the nutrient, we have placed a foam sheet so that कि वो एक direct sunlight nutrient solution पे ना जाए and there will be no any growth of algae. Now, if we have any questions till this page, do let us know and then we will be moving forward. For understanding कि जो मैंने आपको flower pot like structure बताया था, that is net pots and different things. So उनके उसके अंदर हम क्या डालते हैं? Like NFT में हम क्या substrate use करेंगे? Then what are the substrate which are used in drip irrigation systems? All these things will be discussed. So if you have any doubts till this systems page, do let us know and then we will move forward. Hello. Hello. Yes. Sir, whenever we are going to establish the hydroponic system, तो उसमें मतलब हमको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो वाटर है उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, आई मीन उसका कंडक्टिविटी और pH एक्सेट्रा, Right. वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या उसके लिए होना चाहिए स्टैंडर्ड. Okay. Okay. Sure. So that was a nice question, Sharma ji. Basically क्या होता है कि whenever we are planning to establish a hydroponic farm, उसके पहले तो हमें दो चीजें जानना जरूरी है कि जो हम क्रॉप करना चाह रहे हैं वो सच में हाइड्रोपोनिक में करने की जरूरत है और इज इट गुड टू गो विद अ सॉइल कल्टीवेशन यूजिंग पॉली हाउस. ओके, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट. तो अगर हमारी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, वी कैन सिंपली गो फॉर क्रॉप्स लाइक सीडलेस क्यूकम्बर्स यूजिंग सॉइल एज अ मीडियम. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कि वाटर का पीएच क्या होना चाहिए, वाटर का टीडीएस क्या होना चाहिए, ईसी क्या होना चाहिए, एंड हाउ वी विल बी एनालाइजिंग दोस पार्ट, राइट, एंड हाउ वी विल बी टैकलिंग. सपोज में फॉर एन एग्जांपल, जनरली क्या होता है कि जो पानी का टीडीएस है, अभी तो देयर आर रेयर प्लेसेस जहां पे टीडीएस 200 के नीचे है, राइट. सो जस्ट इन केस इफ द टीडीएस ऑफ द वाटर इज बिलो 200 ppm, सो एट दैट टाइम हम वो वाटर को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड
for an example, if the TDS of your location is around 350 to 400, okay, so उस time पे rather than directly stepping into industrial RO, हम एक softener install कर सकते हैं, okay. Along with that, in a farm tour video, I will show you few assemblies जो कि gravel filters होते हैं, disc filters होते हैं, जो कि precipitation and salt particles को, sand particles को filter out करने में help करेंगे, okay. So those things we can implicate. Along with that, अगर TDS 700 या 500 की भी ऊपर है, then industrial RO will be requiring, which will cost you around like 1 to 1.2.5 lakh if you go with any premium brand. Jatin ji, in hydroponics, we will be using all the macronutrient and micronutrient. Okay. In simple words, जितने भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हम सारे उसको केमिकल फॉर्म्स में, सिंथेटिक फॉर्म में वाटर के अंदर ब्लेंड करके प्रोवाइड करते हैं. Also, let me clear, most of the time this is the major confusion ki whether hydroponics is organic or not. So on a practical note, considering Indian norms, hydroponic is not at all organic. It's considered as a residue free farming in India, whereas if we move toward Europe, or we can say US, UK, so those countries consider hydroponic as an organic farming. Also, the use of pesticides will be drastically less in controlled environment as compared to any other, we can say, open field cultivation. Sure, Abhishek, we will discuss this scenario at the end. So we can answer all the queries and we can move toward the work completion of the workshops. And at the end, we will be discussing like how we will be help you in your entire entrepreneurship journey and understanding and learning phase 2. Now moving a little forward, हम इसमें क्या करते हैं? Actually जो आपने यहाँ पे देखा कि this pot like structure, okay? इसके अंदर actual में क्या होता है? Because we will not simply suspending roots into air, right? Then what are the things which are placed below these, right? So those are nothing but different substrates, okay? जैसे कि clay aggregates. Clay aggregates are basically also known as leca balls, LECA, okay? लीका बॉल्स. अब ये लीका बॉल्स क्या होता है? बेसिकली ये एक क्ले होता है. जब हम क्ले को सुपर हीट करेंगे अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस एंड बियॉन्ड, एट दैट टाइम दिस क्ले विल हैव सम पोरस स्ट्रक्चर ऑन इट, जो कि काइंड ऑफ एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, राइट? एंड इनर्ट. So these clay aggregates are completely inert. So it will not have any pH value. It don't react with any nutrients and it don't have any nutrient value also. And don't worry, these leca balls and these clay aggregates will be ready to use from the market itself. So we don't need to go for heating process of 1100 degrees Celsius and more. Now clay aggregates are widely used in NFT system, okay, the deep water culture and EBB and flow. I will show you a video जिसमें कि हम ये ट्रांसप्लांट कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस क्या है प्लांट ग्रोथ के, we will understand, okay. Then this another most widely commercially used one is a coco pit or coir. अब ये जो coir होता है, it is formed by two combinations. The very first one will be a dust part, okay, जो कि powdered form होगा. नारियल का जो outer most blaster होता है, बाहर का जो shell होता है, उसको भी remove it, dry it, wash it multiple time, again dry it, and then उसके कुछ powdered form रहते हैं और कुछ chips रहेंगे, chunks रहेंगे. So that powdered form will be 70% and the chips or chunks will be 30%. Now this coco pit has a really low, we can say, electric conductivity. So lower the conductivity of the coco pit or low the TDS of the coco pit, it will be considered more superior in grade. Also, if we talk crop specific, अगर हम बेल पेपर, चेरी टमाटो जो इंडिया में वाइड कल्टीवेशन कर रहा है, वाइड लेवल पे, वाइडर लेवल पे कल्टीवेशन हो रहा है, उन क्रॉप्स के लिए लोअर ईसी कोकोपीट हम प्रेफर करते हैं. Whereas if we move toward hemp cultivation, so at that time higher EC coco will be more preferred. Along with that, there are few more like mediums or substrates like a grow stone. Grow stone is made up of glass waste और इसका weight जो होगा काफी light weight होता है grow stones का, and glass ये इसका water holding capacity will be really less and we can say aeration is really good.
इसका आप वेट कंपेयर कर सकते हो, वी कैन से सिंपली कंपेयर इट विद द राइस हल्स और थर्मोकोल बॉल्स. सो द वेट इज रियली सिमिलर एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें एरेशन काफी अच्छा रहेगा, बट वाटर रिटेंशन इज बेटर बट नॉट एज मच एज गुड एज कोकोपिट. Then these are the perlite. Perlite will be also like kind of a volcanic rock. जब superheat हो जाता है, so it become really lightweight. The reason we use perlite is that perlite क्या करता है कि excess moisture को hold करके रखेगा. So what we do, we sometimes blend this perlite with cocoa-pit. ताकि अगर considering Indian parameters, like there are a lot of times laborers will simply turn on the irrigation and forgot to turn it off. Okay. और ड्यू टू पावर आउटेज वो भूल जाएंगे ऑफ करना, एंड एंटायर नाइट देयर माइट बी चांसेस ऑफ इरिगेशन. सो उस टाइम पे क्या होता है, दिस परलाइट कम्स इनटू एक्शन. इफ वी ब्लेंड दिस परलाइट विद कोकोपिट, सो परलाइट क्या करेगा, इट विल होल्ड एक्सेस मॉइस्चर इनसाइड इट सो दैट कोकोपिट विल नॉट गेट डैम्प्ड ऑफ, इट विल नॉट हैव ओवर मॉइस्चर. अनदर primitive method of primitive substrate was sand, but sand का जो major issue है, पहला तो ये sterile, we cannot do it. Rest all the things can be sterile using hydrogen peroxides or neem oils. Okay, hydrogen peroxide will be more preferred. Then soil sand is not at all easy to sterile these things. Another major issue is it will become really heavy to transport from one end of the farm to another end. अगर मैं ग्रो बैग की भी बात करूं, ग्रो बैग will have at least 2 to 2.5 kg of sand or cocoa-pit, we can say. If we go with good quantity filling, 2 kg tak we can fill it off. Up 2 kg of dry sand, once we put moisture into it, it will become really difficult to transport from one end of the farm to another end, as commercial farms will have planting capacity of 13,000 minimum per acre. In these gravels, ये आपने कई बार fish tanks में देखे होंगे, ये जनरली आपको सबसे मेजरली यूज होगा ईबीबी एंड फ्लो में. इसमें क्या होता है, फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम में, इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे न्यूट्रिएंट आया, अनदर केस में द न्यूट्रिएंट विल फ्लड बैक इनटू द रिजर्वॉयर. ओके, सो अब इसमें वाटर का ड्रेनेज काफी अच्छा होना चाहिए, वाटर लॉजिंग कैपेसिटी, वाटर लॉजिंग इश्यूज नहीं आने चाहिए जो भी हम सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं उसमें. सो एट दैट टाइम ग्रेवल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये नियरली स्पेरिकल है, जो आपने फिश टैंक्स में भी देखे होंगे. Along with that, ये man-made activities या natural activities like basal layer of a river, running water stream, वहां पे भी आपको ये मिलेंगे. So spherical होने की वजह से इनके बीच में hollow space रहती है, जिसकी वजह से water logging का issue कभी नहीं आता. So if you have any questions till this page, do let us know. We'll work on it, and then we will move toward different phases of like you can say cultivations. Okay. Yes, Ms. Diksha, you can speak. Okay. Saloni, that was really a great question regarding what are the future potentials we can achieve in hydroponic techniques, right? So most of the time in India, 99% of the hydroponic industries are simply working on large scale cultivation of fruity vegetables and leafy crops. Okay. But what we can do, Saloni ji, we can simply implicate these things. I think few of you guys have a hands-on experience or expertise or tinge of knowledge regarding tissue culture.
as I'm personally into personally I'm a biotechnologist by a profession. So I have figured out that the issue which we face in tissue culture, that is the plant, we can simply raise those rare and endangered medicinal plants by a single cell or single leaf. We can cultivate or produce thousands of plants, right? So using that tissue culture, we can able to raise those plants, but after a sapling height, or we can say after 3 to 4 inch height, those plants will not be able to sustain in a natural climatic conditions. Okay, so at that time, what we can do, we can simply do the tissue culture of rare endangered medicinal plants, or few we can say few different exotic crops. We can do the tissue culture, raise it into the test tubes, and transplant it inside a hydroponic system. So at that time, there is no any need of hardening and acclimatization scenario. We can simply create an ideal environment inside a hydroponic system and raise those plants to the optimal age, and then go for extractions, right? Then we will go for extractions and value addition. So due to this, we can simply get a extreme unexpectable ROI from these crops. So there are a few future advancement we can do, but currently India is at a stage where now people are understanding what exactly hydroponics is. श्योर जतिन, आपने जो पीवीसी पाइप के अंदर जो एक रीसर्कुलेटिंग, आई थिंक आपने रीसर्कुलेटिंग सिस्टम बनाया है फॉर टोमेटोज एंड वी कैन से बेल पेपर्स, राइट, कैप्सिकम्स. सो ऑब्वियसली ये वर्क करेगा. द ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज कि आपको जो कोकोपीट आप उसमें यूज कर रहे हैं, यू कैन सिंपली चेंज इट विथ लिका बॉल्स. अगर आप पाइप में कंटिन्यू वाटर सर्कुलेशन रख रहे हैं, if you are not going for continuous recirculation, आप कोई ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं, then you can simply use कोकोपिट. क्योंकि रीजन क्या होगा, आप अगर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो कोकोपिट कहीं ना कहीं जाके आपके मोटर्स में जाके चोक होगा, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल की तरह होता है. सो वो कहीं ना कहीं से आपको चोकिंग इशू देगा, जिसकी वजह से आपका वियर एंड टेयर वाला इशू काफी ज्यादा आएगा. ओके, कंटिन्यूअस वाटर सर्कुलेशन. ओके, सो एट दैट टाइम आप कोकोपिट की जगह यू कैन सिंपली यूज लिका बॉल्स, और एल्स कोकोपिट को आप मस्कुलिन क्लोथ या फिर कोई मेश लाइक कपड़े में बांध के फिर रखें, ताकि वो वॉश ऑफ ना हो एवरी सर्कुलेशन के बाद. नाउ विल मूव टुवर्ड द सोइंग सिनेरियो, राइट. सो सोइंग में क्या होता है एक्चुअली कि हम एक जर्मिनेशन ट्रे वी विल बी टेकिंग. ओके, आई विल शो यू अ जर्मिनेशन ट्रे जिसमें हम सोइंग करते हैं. दिस इज अ जर्मिनेशन ट्रे. ऑन एक्सट्रीम राइट कॉर्नर यू कैन सी, ये जो होता है ये जर्मिनेशन ट्रे है. अब इसमें वी डू टू टाइप ऑफ सोइंग. द फर्स्ट वन इज द लाइन सोइंग. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने एक लाइन में 10 सीड्स लगाए हैं, एंड ऐसे 10 लाइंस है. सो दैट इज एक ट्रे में हमारे 100 सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं. नाउ ये जर्मिनेशन होने के बाद, लाइक सपोज मैंने आज सीड्स लगा दिए, विद इन 4 to 5 days देयर विल बी डेफिनेटली जर्मिनेशन. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लीफी क्रॉप्स. ओके, सो विद इन 3-4 days देयर विल बी जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन के बाद हम क्या करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स में, या फिर कोई भी नर्सरी आप देखिए, कोई भी क्रॉप की नर्सरी हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, वो ऊपर वाले सरफेस से नहीं होगा. ओके, हम अपर सरफेस से डायरेक्टली वाटर पोर नहीं करते, उनके लीफ पे भी हम वाटर नहीं आने देते. कैन एनीबडी हेल्प मी विद लाइक व्हाई वी डोंट गो फॉर सिंपल मेथड ऑफ सिंपली पोरिंग वाटर ऑन टॉप ऑफ इट, या फिर जो भी हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हम ऊपर से लीफ पे क्यों नहीं स्प्रेड कर रहे हैं इन एनी नर्सरी. द रीजन इज रियली सिंपल, क्योंकि हम जो जर्मिनेशन फेज में होता है प्लांट, तो इनिशियल के 1-2 दिन हम उन्हें नॉर्मल वाटर प्रोवाइड करते हैं.
After that we simply add some MAP, okay, monoammonium phosphates और few different low concentrated nutrient. तो अब जब हम कोई nutrient उनको provide कर रहे हैं, so if we put those particular nutrient directly from the upper surface, so leaf will have some spots on it, which will reduce the sales price, जो कि quality parameters में थोड़ा एक negative impact create करेगा, right? So to avoid that, what we do कि हम इसको basal side से irrigation कराते हैं. I will show you a video so you can understand कि how these things work. Okay. So ये होता है germination tray. Okay. अब आप चाहे तो ऑरेंज कलर का ट्रे यूज करें या फिर ये सेपरेट कैविटी वाले यूज करें, इट्स इजी टू गो. द रीजन फॉर यूजिंग दिस जर्मिनेशन ट्रे विद सेपरेट कैविटी इज दैट कि इसमें रूट्स इंटरलॉक नहीं होंगे. ओके, नाउ अब हम वाटरिंग कैसे करते हैं? अब हम अगर ऊपर से नहीं कर रहे हैं तो हाउ वी गो फॉर वाटरिंग? सो द बेसिक थिंग इज दैट हम एक ट्रे लेंगे जिसमें वी विल फ्लड द न्यूट्रिएंट और फ्लड द वाटर. ओके, एंड वी विल प्लेस अनदर ट्रे जो कि सब्जेक्टेड है जर्मिनेशन वाटरिंग के लिए. अब आपने देखा ये ट्रेस के नीचे होल्स होते हैं. सो इन होल्स की वजह से राइज इन कैपिलरी एक्शन टेक्स द प्लेस. ड्यू टू राइज इन कैपिलरी द न्यूट्रिएंट will travel from this basal tray to the upper tray, which is subjected for irrigation. So this is how we do the irrigation in early germination phases till the transplanting. अब suppose जो cycle होता है bell pepper का, cycle जो होता है bell pepper का, it will be of around we can say 45 days maximum, जिसमें से initial 20 days तक plant will become ready to be transplant. Basically उसके roots का कुछ size होना चाहिए ताकि वो NFT का जो basal layer है उस तक पहुंच पाए जहां में nutrient आ रहा है, right? So you can see in this video, our teammate, our intern is simply stroking off the entire coco pit जो कि root के साथ लगा हुआ था. She is pulling that particular plantlet outside the germination tray, removing the coco pit, simply dipping it into the water so excess coco pit निकल जाए. And these are the lica balls. Okay, जो नीचे आपको gravels की तरह दिख रहे हैं कुछ pebbles, those are the lica balls. So we'll attach these lica balls near to this particular net pot, near to the root zone. And this is how we place all these crops. The crop on your screen is a romaine. Okay, and now अब जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ दूसरा क्रॉप लगा हुआ है पीछे, then here is some different crop, here is some different crop. So ये होता है क्रॉपिंग साइकिल सेट करना. So before like changing a cropping cycle, what we do, ये जो NFT है, these are openable from upper part. So we can simply remove that NFT, wash it, discard that entire suppose कोई algal growth होगा, we can discard it, wash it, and then we can place new plantlets. So this is how the transplanting will work. Also इसमें एक और step आती है pruning. Pruning is nothing but removing unwanted part of plant. अब ये तभी आता है जब हम large rooted crops plan कर रहे हैं या large cycle crop plan कर रहे हैं. For an example, bell pepper. तो बेल पेपर में क्या होगा कि हमें फ्रूट का शेप और साइज काफी अच्छा चाहिए. सो हम क्या करते हैं, वी विल सिंपली रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ अ प्लांट, जैसे कि लैटरल ब्रांचेस. तो लैटरल ब्रांचेस रिमूव करने की वजह से क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा टारगेट होगा एग्जैक्टली फ्रूट्स की तरफ. तो दिस इज हाउ हम वी विल बी गेटिंग मोर प्रिसाइज एंड डोमिनेंट शेप एंड साइज ऑफ द फ्रूट्स. ओके, अब एक बेसिक सिनेरियो विल अंडरस्टैंड. ओके, कि क्या क्या होता है एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक्स में. सो एट वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज कि कोकोपीट है या लिका बॉल्स है, वी हैव टू डिसइंफेक्ट इट यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. देन वी विल गो फॉर सोइंग. जब सोइंग हो जाती है एंड जब इफ आई टॉक फॉर लीफी क्रॉप्स, फॉर लीफी क्रॉप्स अराउंड 20 डेज के बाद प्लांट विल बिकम रेडी टू ट्रांसप्लांट. whereas फ्रूटी वेजिटेबल्स में 4 to 6 लीफ के बाद इट विल बी रेडी टू ट्रांसप्लांट इनटू एक्चुअल ग्रोइंग जोन. अब तक वो जर्मिनेशन ट्रेज में रहेगा. ओके, after transplanting, growth will be there and we will monitor any deficiencies, any issues faced by the plant. We will take care of those part. Then harvesting and again cleaning and maintenance of the farm.
I think we have covered this life cycles. So yes, entire 45 days का cycle है, जिसमें से 3 to 5 days will be germination date, 5 to 20 days will be like increasing the TDS and growth phase. And जब plant हमारा इस stage पे पहुंचता है, that is the second photograph, you can see the red arrow, this one. So now the plant is ready to transplant into NFT channels. And then till 45th day, it will grow and then we can harvest it simply. Now, bell pepper ka, there is a larger duration, so it will take 7 to 10 days for germination. Once it has 4 to 6 leaves, we can simply remove it from the germination trays or nursery trays and place it into coco pit. Then we go for pruning, and then harvesting starts after 3 months. And it lasts up to 8 to 9 months. Then this nutrient, right? Hydroponic nutrient क्या होता है एक्चुअल में और ये क्या चीजों से बनता है, right? So hydroponic nutrient is basically nothing but all the macro and micronutrient. Now the reason we have placed this nutrient into two combinations, that is this calcium nitrates, all these nitrates and remaining sulfates, right, and phosphates. अब इनको डिवाइड करने का रीजन ये है कि जब ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो उस टाइम पे ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और उनका कुछ एनर्जी लॉस होगा which will reduce the efficiency of the nutrient, right? तो हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट टैंक्स में रखेंगे. फॉर एन एग्जांपल टैंक ए, टैंक बी, ओके, दैट इज दिस पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब हमने इन दो टैंक में ये न्यूट्रिएंट फिल किया which is in a concentrated form. Then we will get another tank which is larger in volume. अब इसमें already normal water poured रहेगा. So what we will do, we will take equal quantity of part A and part B and blend it into the main tank. Okay. Then we go for returner valve को हम ऑन करेंगे या फिर रिंग ब्लोअर को ऑन करेंगे या कोई भी रॉड के थ्रू वगैरह हम इसको मिक्स कर सकते हैं thoroughly. Once it is mixed, we'll check the TDS and pH. अगर TDS कम है तो हम और हमें डिजायर्ड TDS 800 का चाहिए था और अभी 600 हुआ है, so we'll simply take more quantity, equal quantity and again blend it into the main tank, mix it, calibrate it, check the TDS, check the pH. If pH is up and down, we will use pH up down solutions and then circulate to the plants. Okay. Now this deficiency, अब ये deficiency क्या है और कैसे identify करनी है, right? Now you can see कि यहाँ पे kind of iron भी yellow color का दिख रहा है, nitrogen भी yellow color का दिख रहा है. Now how will I get to know कि iron की deficiency है, nitrogen की है? Because leaves will somehow turn yellow, right? The reason is really simple. ये सारा concept जो है hydroponics का, it simply works on mobility. जो plant के अंदर xylem phloems होते हैं, mobility basically कोई भी object की move करने की tendency, okay? कोई भी molecule की move करने की tendency. अब ये जो कैल्शियम है, बोरॉन है, आपने कई बार सुना होगा दिस कैल्शियम एंड बोरॉन्स आर ट्रीटेड विथ लाइक फोलियर स्प्रेस. ओके, सो वो फोलियर स्प्रेस की वजह से होता है. सो दैट्स व्हाई इसमें मोबिलिटी कम होने की वजह से कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी आपको ऊपर वाले पार्ट पे ही मिलेगी. Now if you have any questions till this, let us know. And now the actual game begins. That is, what is a polyhouse और कंस्ट्रक्शन के क्या चीजें आती है, what are the quality parameters you should make sure, what are the equipment accessories, and then a brief Q&A session. Alok ji, most common challenges in hydroponics will be selecting a wrong crop. Okay. For an example, agar my location is nearby to Delhi or Mumbai, okay, or any metropolitan city. So at that time, if I go for cultivating of leafy crops, it's good to go. Whereas if my location is somewhere around, like we can say Paonta Sahib, that is which is near to Himachal's border, we can consider that. Or if we talk about any another location, let's say Alwar, Rajasthan में Alwar is there, Kota is there. Now these locations, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे leafy crops का demand काफी कम रहेगा. Another thing is कि leafy crops जो है, these will be a perishable item.
So somehow we will get only like on practicality 5 to 6 hours window to deliver it to end consumer. And demand काफी ज़्यादा segregated है. So इसकी वजह से better रहेगा कि हम crop ऐसा select करें जिसका bulk requirement हो and semi perishable हो, ताकि we can at initials we can stretch our limits for marketing purpose, right? So we can go with any larger root crops जिसका थोड़ा we can say perishability or shelf life ज़्यादा हो. Sir, is there any scheme and subsidy to the central government of India for establish the hydroponic system? Sorry, can you repeat? Your voice is breaking. Sir, I'm saying that is there any schemes and subsidy support to the central government of India for establish the hydroponic? Yes, definitely there are some financial aids. Like National Horticulture Board provides subsidy on 50% on external structure. Also, few more internal parameters can be enveloped. So if I talk about per acre wise, so we can easily get a subsidy of around 35 lakh rupees per acre for fruity vegetables, specifically bell pepper, cherry tomato, and seedless cucumber. Because government will provide subsidy based on crop also. For Nagpur, Shantanu, definitely bell pepper will work because currently like the demand of this, we can say hotel restaurant chains are really high over there. So we can go with bell pepper at first and then we can expand as per the demand. But leafy crops will not be a much better option because currently entire supply chain of these different exotics like avocados and tomatoes, these things are coming through Nanded location itself. So better will be we can start with bell peppers, and we have really good connectivity from Nagpur, considering like road transportation also, and in fact trains are also really good connectivity. So we can utilize it for longer distance catering. For Jharkhand, definitely we will go with fruity vegetable itself, not with leafy crops. Okay, actual Prasad, actual combination and actual dividation will differ crop wise. Okay, so that was for a low concentrated herbs, whereas if we move toward the leafy crops, so at that time the concentration and segregation will be there. Definitely there will be some chances of reaction. That is, you can Prasad, you told nitrates and phosphates, we have placed it in a similar group. Definitely there will be some chances of reaction and precipitation, but if we use it at a lower concentrated, not extremely high concentrated, so at that time it will work. Just allow me a minute. I'm just arranging the video so that I can share you the screen and we can understand how these things will be like appearing on a commercial scale. Yes, definitely the cost of selling matters a lot in hydroponics. If we talk about Indian markets,
not practically like we will be simply tapping the horeca, because initial में it will be tough कि हम direct hotel restaurant catering chains के बारे में बात करें कि उनकी demand and pricing क्या हो, क्योंकि if we are starting a new venture, so obviously somehow हम मंडीज को supply करेंगे, so at that time इतना major fluctuation नहीं आएगा considering hydroponic या soil crop, क्योंकि मंडी वाले somehow will try कि sir we get a similar pricing, okay. But if I talk about year round production के point of view से, so now we can get a more pricing, क्योंकि अगर winters की बात करूं, so winters में the price of bell pepper will drop to 80, 100, 120 rupees per kg in mandi, whereas in summers and monsoon it booms up to beyond 150 and sometime beyond 250 also. So it depends on the type of crop we are selecting and how we are setting up a cycle. Also, if we are supplying to supermarket chains like Blinkit, Zepto, so at that time क्या होता है कि अगर हमारा hydroponically raised crop है, will get a superior pricing as compared to soil one, क्योंकि our shape and texture will be uniform, right? Along with that, shape और texture के साथ साथ कुछ और parameters और आ जाते हैं, जैसे कि there will be no stress onto the plant. Also एक add-on refrigerated वाला हमें एक add-on we can say shelf life का scenario मिल जाएगा. That is जो कि ज्यादातर Blinkit, Zepto वालों को required होता है कि उनका जो crop है should last for at least like 5 days in refrigerator या फिर एक normal home purpose fridge में. So it is possible for hydroponic crop. Whereas अगर आप normal शिमला मिर्च रखोगे which is soil raised, so definitely it will have wrinkles within 3-4 days. Whereas hydroponically raised one will have the wrinkles but at a delayed time. Hello, sir. Yes. Hello. Hello. Yes. Sir, I do have a question. Sir, you have told that hydroponic in India is a residual type of farming, but in foreign it is a organic farming. So what makes it different in foreign that it is called as organic farming in foreign as compared to in India? Okay. See, that was a nice question, Shivi. Definitely, what actually happens in India, most of the chemicals, the selling price matters a lot. Most of the things, that is the nitro, we can say calcium, boron, magnesium, molybdenum, zinc, right? All these things will be used as a lab synthesized one. Okay. And it will be in a, we can say normal format. Not all the chemicals will be EDT or chelated format. Okay. If we go for EDT or chelated format, which is practiced widely in foreign countries, at that time they label it as hydroponics, whereas India में we are using lab synthesized one and not a chelated format also, तो जिसके वजह से labeling it organic is really tough. Foreign countries में what they do, they completely understand what exactly a residue free, what exactly a hydroponic, and what exactly a organic tinge we can get it, right? But in India we can say it as pesticide free, not organic. We can say it as residue free but not organic, क्योंकि कुछ इंडियन नॉर्म्स की वजह से जो केमिकल्स विच वी आर यूजिंग, राइट, वो होंगे हमारे नॉट वी कैन से कैल्शियम फॉर एन एग्जांपल हम बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, विल बी सिंपली यूजिंग लैब सिंथेसाइज्ड वन. अब कैल्शियम में भी हम नॉर्मल वाला यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज, वी विल ओनली यूज फूड ग्रेड वाला, वी विल नॉट यूज द ईडीटी और चिलेटेड फॉर्मेट. अगर हम ईडीटी और चिलेटेड फॉर्मेट यूज करेंगे so कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. And yeah, after 5 to 10 years, there are high chances कि Indian government भी इसको envelop कराए as a residue की जगह पे एक kind of pesticide free label के साथ and organic label के साथ. But currently in upcoming 2-3 years, there is no scope कि हम इसको organic भी बोल पाए. Now I think we are good to move forward. So I will share you a screen, okay, and I will show you a videographic representation, video representation of our base farms in Dehradun. Whereas if I talk specifically about the coverage we did, so we have farms in Andaman's Port Blair, which is extreme north south side, and we have farms in Nainital, okay, so which is extreme northern side.
If I talk about total poly houses we have throughout the India, so we have 40 plus poly houses or controlled environment structures throughout the India, and we support for construction along with growing and all the parameters. Vishesh, actually, I don't know what exactly this Mogani farming spoke. So I think our director, Mr. Chandramani Kumar sir, will be joining soon. So he will be giving you a better, insightful answer for this part. So this is a naturally ventilated poly house. अब ये naturally ventilated poly house क्या होता है और इसको naturally ventilated क्यों बोलते हैं? So the reason is really simple. This is a side vent जिसके through air will enter inside the poly house. Colder air will stay at basal side and warmer air will try to escape from this top vents. So इस way में इसका air flow maintain रहेगा. Also to maintain temperature and humidity, we have various different components. I will showcase you these things. So once we entered into this hydroponic system, you can see दो दरवाजे थे. The first door was on extreme right, जहाँ से we entered, and the another door is just beside the girl standing. So ये दो door का assembly we don't place it into straight path. We place it into different not aligned in a straight path, into the opposite direction. Reason is that insect usually travel in straight line. So to avoid that part, we place two doors. Then the most important part usually, which none of the hydroponic farms on practical note follows, that is the head cap, shoe cars, these things, and sanitization. These things plays a major role. First जो शर्ट आप पहन रहे हो, अगर आप रेड कलर का शर्ट पहन के जा रहे हो, definitely aphids might be sitting on your shirt and will enter into the farm. This is a 60,000 square feet hydroponic farm completely dedicated for fruity vegetables, and it's a R&D zone. Now, this these white color things, these are the grow slab. Okay, it's of 1.2 meter. ये जो आपको on screen दिख रहा है, this is 1.2 meter part, जिसमें we have placed coco pit. Okay, 1.2 meter में coco pit is there and has 4 planting capacity. Okay, now this particular white rod like thing, this was the drip arrow, and यहाँ पे आपको कुछ grooves दिख रहे होंगे. So due to these grooves, the water or nutrient will be delivered to the plant. And these small rounds, these are the pressure control junctions, PCJ, which will emit equal pressure to every plant. Now this particular circular thing, this is an air circulation fan. I'm really sorry for the worst quality of the video because I'm facing a lot of network issue. So in PPT, I will show you the high defined photographs of this part. Okay. So this is the air circulation fan. ये क्या करेगा? The air which is inside the fan, it will be circulated thoroughly. Along with that, foggers will be there, जो कि छोटे water droplets place करते हैं polyhouse के अंदर, और वो water droplets cooling और humidity manage करने में help करेंगे. And these all things are completely IoT based. We'll show you the IoT panels also. This is the fogger, जो कि water droplets emit करेगा, and ACF will circulate it throughout the polyhouse. And this white material on upper surface of the polyhouse, this is the aluminium shade net. It will reflect heat wave and only allow photon particles to pass. This farm is completely covered with, we can say, drip irrigation. This is the automation panel.
This is an automation panel made by our another company, that is Kisan Solutions by Agrijoy. So using this panel, ये जो screen आपको दिख रही है, in this screen you have to set the parameters, or agronomist will set the parameters कि क्या temperature चाहिए है, minimum range and maximum range. What is the humidity required, minimum and maximum. Set those parameters. All the electronic devices, equipment, accessories will be turned on and turned off automatically. Okay, and everything will be managed by this part only. So you don't need to worry about maintaining temperature, humidity parameters. Then these are the tanks. 4 tanks I was talking about, जिसमें हम stock A and B रखते हैं, and 2 में हम pH up, pH down रखते हैं. So it will take all the nutrient from these 4 tanks, and then it moves toward the injector technologies automation we have, that is fertigation in it. Okay. In this fertigation in it, all we need is to feed the data, and TDS pH set, okay, it will circulate to the plants itself. Okay, so if you have any questions till this page, do let us know, and then we are open for uncapped Q&A session, where we will be discussing all the entrepreneurship opportunities and all the queries we have. This is the naturally ventilated polyhouse. This is how a fully climatic controlled polyhouse will work. ये जो होता है ये naturally ventilated है, तो basically इसमें हम बहुत ज़्यादा temperature manage नहीं कर पाएंगे. Fruity vegetables are possible inside this farm. Earlier leaf crops was possible. अभी अगर मैं नागपुर लोकेशन की बात करूँ, specifically was from Nagpur. So in fact नागपुर में naturally ventilated polyhouse में it will be tough to fruity vegetable also. So at that time we will be requiring more precise temperature controlling, that is a pan and pad setup. So ये जो cellulose cooling pad will be placed at one end of the farm, similar to the cooler structure, and opposite end exhaust fans. So इसकी वजह से temperature humidity काफी easily manage होगा. This is how the NFT farms will appear, and this is the space utilization technique. जो walking area है, we can simply utilize it for additional cropping. These are the manual meters, whereas these are not necessary if we are going with automation panel. Okay. Now अभी जो business opportunity है कि हम कहाँ हमारे production को, चलो एक बार we have established a farm, we have done the land survey parameter कि हमें क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे कोई kind of we can say large building ना हो, कोई aeration को blockage ना हो, along with that flood prone area में ना रहे setups, right? These things we have to make sure. Electricity connection and water source, these things will be required. Just a minute. Mr. Chandramani sir will be also joining. He is our director of Agrijoy. So he will be joining in couple of minutes. So we can have more precise Q&As also. So moving toward like what are the opportunities we can get into this hydroponic business. So at very first we can simply tap into retail chains, private investors, along with that hotel, restaurant, catering chains, industries, NGOs, and we can simply go for exporting our production also. Now the thing is कि हमें क्या क्या वे से स्टार्ट करना चाहिए. इनिशियल हमारा फर्स्ट स्टेप इन मार्केट क्या होना चाहिए, क्रॉप सिलेक्शन कैसे करना है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% of the business of hydroponics fails due to wrong crop selection based on location. Okay, so अगर मैं लोकेशन मेरी जैसे मैंने कहा था कि अलवर है या फिर थोड़ा पुणे से अराउंड नासिक से थोड़ा 100 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट्स, और इट्स इन Yavatmal, or we can say Paonta Sahib, any these locations, ऐसा कोई tier 3 tier 2. So at that time first time पे we should avoid leafy setups. leafy crops करने की जगह we can go with fruity vegetable. रीजन ये है कि बल्क डिमांड है और हम लॉन्गर डिस्टेंस कर पाएंगे. ईवी में क्या होगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेक्टिकनेस और हिंड्रेंस होगा, क्योंकि इनका जो डिमांड होता है इट विल बी
not in a bulk, it will be segregated, and supermarkets में भी हमें demand मिलेगा, but it will be not in bulk. So at that time better रहेगा कि हम fruity vegetable से start करें, get to know the market demands and then plan for this leafies at a expansion model or higher end crop at a expansion model. Whereas if we talk about growing proficiency of our company, so we as in AgriJoy are proficient in growing vanilla, blueberry, any crop you want. But as an initial business, we should start with sure shot market crop. Now, another thing is कि ये जो Zepto है, Blinkit है, recently these people have introduced a separate column for hydroponic crops. Okay, so we can sell these crops to those guys, Blinkit, Zepto people, on a contractual rate at a higher price. क्योंकि plus point है, we are the only one who can provide year-round supply. क्योंकि we have controlled environment. Along with that, हम cycles को ऐसे manage करते हैं कि हम suppose bell pepper का 8 महीने का cycle है, तो हम उसको 3 महीने तक जो 2 महीने का ड्यूरेशन जर्मिनेशन का है, राइट, वो हम ऑलरेडी जर्मिनेशन ट्रेज में कवर करेंगे, एंड वंस माय प्लांट रीचेस 8 मंथ आई विल सिंपली रिमूव इट फ्रॉम द ग्रो स्लैब और कुकोपिट एंड प्लेस 2 मंथ ओल्ड प्लांट लेटर. सो मेरा जो गैप फेज है हार्डली 10 to 15 डेज का ही रहेगा, हार्वेस्टिंग का गैप. आलोक, डिफरेंस बिटवीन लीफी सिस्टम एंड फ्रूटी वेजिटेबल्स की सिस्टम, अगर मैं इंडियन पैरामीटर्स की बात करूं तो इंडिया में फ्रूटी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन पे और डच बकेट पे किया जाता है. मोस्ट सक्सेसफुल है ड्रिप इरिगेशन क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम रहेगा, वेयरएज ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम रहेगा. अगर मैं पावर आउटेज की बात करूं तो अगर दिन में 3 से 4 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, सो इट्स मोर देन इनफ टू कीप अ फार्म रनिंग. ओके, क्योंकि हम क्या करेंगे 30 मिनट्स के लिए सपोज 3 बार इरिगेशन कर लिया है, अज्यूम समर्स है 4 टाइम वी हैव डन द इरिगेशन, बट इरिगेशन हमारा 4 टाइम हुआ एंड टैंक फिल अप करने के लिए हमें लगभग मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा लग गया. सो दिस इज द पावर सिनेरियो वी रिक्वायर्ड. वेयरएज लीफीज में रिसर्कुलेशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी, एंड लीफी क्रॉप्स हर लोकेशन पे नेचुरली वेंटिलेटेड में नॉट पॉसिबल. इट्स ओनली पॉसिबल इन हिमाचल रीजन्स नेचुरली वेंटिलेटेड में. अगर fan and pad में we can do, we are going for fan and pad system, so then we can grow leafy crops at any location. Whereas जतिन टेम्परेचर जो होगा क्रॉप्स के लिए ये थोड़ा डिफर कर जाता है कई बार, क्योंकि क्रॉप वाइज इट विल डिफरिंग. अगर मैं फ्रूटी वेजिटेबल्स की बात करूं सो इट कैन बेयर आउटसाइड टेम्परेचर अगर 38-40 डिग्रीज तक रीच कर रहा है, सो इट कैन सस्टेन इन सपोज 42 तक भी, सो इट कैन सस्टेन इन नेचुरली वेंटिलेटेड. इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट, इट वी नीड अ fan and pad setup. अगर हम लीफीज की बात करें तो लीफीज एट एनी लोकेशन समहाउ वी नीड फैन एंड पैड ओनली, अ फुल्ली क्लाइमेटिक कंट्रोल सेटअप. Also guys, we are open for uncapped Q&A session. So आपको जो भी queries, जो भी doubts हो regarding hydroponics, regarding entrepreneurship opportunities, regarding anything, we will be discussing it right away. And I highly appreciate अगर वो like we can go with chat medium or you can simply unmute yourself. So it will be more interactive session. Can we go for Kesar cultivation in hydroponics? Sorry Amit, can you repeat which crop? Kesar. Saffron, yes, definitely. Yeah. We can go for cultivation of saffron or kesar in hydroponics. In fact, hydroponic is the method through which we go for these things. अब जो मैंने आपको जो फार्म की वीडियो दिखाई थी, that was of a commercial outdoor farm. Whereas अगर हम saffron करना चाहे, we also did those things, cultivation of saffrons and everything. So the only feasible option is कि हम उसको indoor में करें, okay, indoor setups, or we can simply get some containers and we can do the setups into the container. Now majorly जो आपने major issues saffron में देखे होंगे कि operational cost बहुत ज्यादा है.
which is a real fact. अब क्या होगा अगर मैं saffron cultivate कर रहा हूं एक कंटेनर में, so मेरा electricity cost per month will be revolving around 50 to 60,000 for 40 feet container. Okay, मेरा electricity cost आ गया, प्लस मुझे इसमें एयर एसीज लगाने पड़ेंगे, ह्यूमिडिफायर्स लगाने पड़ेंगे, ग्रो लाइट्स लगाने पड़ेंगे. एक कंटेनर मेरा 70,000 का पर मंथ का एक्सपेंस लेके जा रहा है. Along with that, agronomist you can consider at least इंडिया में saffron cultivation वाला 30,000 से नीचे में नहीं आएगा. Okay, so 30,000 rupees agronomist salary. Sum up recurring cost आपकी 1 lakh हो गई. Nutrient cost which will fall around 5 to 6 lakh rupees per cycle. Okay, and जो सूडो बल्ब्स की कॉस्ट है जो कि सबसे मेजर इशू है, सूडो बल्ब्स हमें लाने पड़ेंगे एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन से, जो कि काइंड ऑफ एक सैपलिंग की तरह वी कैन से, ओके, सिंपल वर्ड्स में एक सैपलिंग की तरह होता है, एक प्लांटलेट की तरह होता है सूडो बल्ब्स. इट्स नॉट अ बल्ब एक्चुअली, सूडो बल्ब्स, दोस थिंग्स जो कि एक सीड की तरह काम करेगा. ये चीज हमें नॉर्थ रीजन से लाने हैं. वी हैव टू ग्रो इट इनटू कोकोपिट. अब मेजर इशू क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन है एक 40 फीट कंटेनर में से यू विल हार्डली गेट मैक्सिमम, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी पे बताऊं तो इट विल मैक्सिमम यील्ड पर 40 फीट कंटेनर विल बी 1 to 1.5 kg एट एक्सट्रीम. इसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं आएगा. सो अगर हम इसको लार्ज स्केल पे करें, अब जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और वो चीजें बताई थी, लेबर सैलरी कॉस्ट, राइट, कि लेबर या एग्रोनॉमिस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो हमारा 1 लाख हो गया, एक साल में 12 लाख हो गया. एंड रेवेन्यू इफ वी सेल इट विद द प्राइस ऑफ प्रीमियम प्राइस 6 लाख रुपए पर किलो, तो भी वी आर गेटिंग अराउंड 9 लाख रुपीज ओनली. तो यहाँ लॉस में जा रहे हैं. सो इफ वी आर प्लानिंग सैफ्रॉन, इट शुड बी डन ऑन अ लार्जर स्केल, कि एटलीस्ट 6 to 7 आपके कंटेनर्स होने चाहिए. एंड आप नॉर्मल एसीज या स्प्लिट एसीज की जगह यू शुड गो विद डक्टिंग ऑफ एसीज, एसी डक्ट्स, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपके बाकी कॉस्ट लोअर डाउन हो जाएंगे. क्योंकि हमने जो लाख रुपए पर मंथ कॉस्ट काउंट किया है, इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें हमने सीड्स नहीं कंसिडर किए, लाइक बल्ब्स का कॉस्ट नहीं किया, न्यूट्रिएंट कॉस्ट नहीं किया, कंज्यूमेबल कॉस्ट नहीं किया. So somehow if you want to go with a commercial point of view for saffron, it should be done on at least 5 to 6 containers. Okay. Have you ever implemented such type of saffron cultivation? Yes, we did the saffron cultivation in Dehradun itself, whereas we have done the R&D zones. The video I have shown you, that's of our R&D zone in fact. So you can simply walk off to our R&D zone, and currently we have installed various different systems of hydroponics also, जो कि इंडिया में viable है भी नहीं, but still for understanding purpose we have installed those things. So you can compare कि क्या चीज सच में viable है, क्या उसमें issues आ सकते हैं practicality basis पे, all this scenario. So you can simply like get my number from Tanuja ji, and she will definitely like you can simply coordinate with her also, and she will guide you regarding the farm tools and all scenarios. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Saloni, definitely hydroponics will align to a good agriculture practices and precision of agriculture. Definitely it will align, क्योंकि क्या होता है हाइड्रोपोनिक में हम एक तो पहले न्यूट्रिएंट काफी प्रिसाइज दे रहे हैं. सो शेप साइज वाला एक सिनेरियो तो बहुत बेटर यील्ड वाला एक हमें तो मिल ही जाता है. अनदर थिंग इज कि इसमें प्रिसीजन इसलिए है क्योंकि हम कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं. देयर इज नो एनी हिंड्रेंस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, देयर इज नो एनी हिंड्रेंस ऑफ बारिश हो गई, धूप आ गया, मार्केट इज कोलैप्सिंग, देयर इज नो एनी इश्यूज. इनफैक्ट इफ वी आर प्लानिंग फॉर हाइड्रोपोनिक में वी कैन सिंपली कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप प्लांट को थोड़ा एक वीक बाद हार्वेस्ट करना चाहते हो फ्रूट्स को, so you can simply lower down the TDS, that is the concentration of nutrient, so you will have more control over to growth phase. Along with that we will be having control on climatic parameters, nutrient delivery parameters, right? So I think it will be considered more precise as compared to traditional farm. So, Mr. Abhishek, even I had a question regarding this. Yes, That, basically, when we talk about, say, hydroponics as a business overall, because most of the Right. people who are in this meeting today with us are here because they are either considering to start this, or
they want to know more about if we started, how it will go. So my question basically is that, if for example I want to start this, right? What sort of investment am I looking at on the seed stage when I want to just start it, right? Okay. And on that investment, at what point of time can I expect a return on investment, or at least break even, so that I can start making profit after that? Okay, sounds good. Definitely. So Pankajji, what actually happens? I will simply first clear with the subsidy parameters, right? So according to National Horticulture Board, since last August, this 12th of August 2025, they have passed a new GR which states that the subsidy from central government or NHB will be applicable only on the area beyond 4,000 square meter or 1 acre. Okay. So minimum area हमारा आ गया 1 acre का. Let's assume we are starting with 1 acre. And we are starting with a safer crop like bell pepper. Okay, so bell pepper का अगर हम start करना चाहे 1 acre में, so we will be getting 35 to 40 lakh का subsidy. Okay, now let's I will simply share my screen so we can understand the calculations. Actual subsidy कितना होता है and how we will be working. So now the rates according to National Horticulture Board is 1,000 rupees per square meter. Okay, and we are implicating this project on at least 4,000 square meter, right? That is, we will get 40 lakh rupees. Now the subsidy is only on external structure of the polyhouse and few internal components. So it will be sum up around 20 lakh. But as we are into this business since long, we can drag it up to 35 to 40 lakh per acre. We can, all we need is to showcase the actual scenarios which we will be falling under and we will claim those parts. So मान लीजिए 40 lakh का subsidy we will be getting. Now what actual scenario is, this subsidy will be a back end subsidy. Okay, so somehow we need to go through a loan process, then that loan amount में से subsidy will be minus. Okay, so let's assume कि जो initial scenario क्या होता है as an entrepreneur, what you can do, कि पहले तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा जो कि एनएचबी के हिसाब से मिनिमम 50% होना चाहिए टोटल प्रोजेक्ट का. ओके, लेट्स अज्यूम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन कंसीडर अ टोटल प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड लाइक 1 CR, whereas usually for 1 acre including every automation everything it will be 70 lakh, not more than that. Okay, but एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वी कैन कंसीडर 1 CR का प्रोजेक्ट है, इसका मिनिमम लोन हमें 50 लाख का चाहिए होता है, बट बैंक आपको जनरली 70 to 90% लोन प्रोवाइड करेगा. ओके, सपोज 90% लोन यू हैव टोकन फ्रॉम एनी बैंक, नेशनल एनी नेशनलाइज्ड बैंक और एनी प्राइवेट बैंक. ओके, 80 लाख का लोन आया. अब आपका 80 लाख के लोन को यूटिलाइज करके विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन विल बी वाइंडेड अप विद इन 2 months. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 80 लाख में से 40 लाख विल बी डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड. ओके, एंड रिमेनिंग 40 लाख यू हैव टू पे बैक टू द बैंक. जो आपने लोन लिया था 80 लाख का, उसमें से सब्सिडी अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड, रिमेनिंग वी हैव टू पे बैक. ओके, नाउ जो हम रीपे करते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन इन्वेलप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स AIF स्कीम, जो कि आपको 2 CR तक का, 2 करोड़ तक का जो लोन है उस पे इंटरेस्ट रेट का 3% सब्सिडी देता है. ओके, सो वन सब्सिडी वी हैव अवेल्ड फ्रॉम NHB जो कि 50% ऑफ सेटअप. ओके, एंड वन सब्सिडी विल बी इंटरेस्ट रेट पे. सो अब अगर मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोस की बात करूं, सो 1 एकड़ का वी कैन से कि लाइक सब्सिडी अमाउंट विल बी 40 लाख. ओके, अब 80 लाख का लोन लिया था, 40 सब्ट्रैक्ट हो गया एंड 40 लाख बचा है. और जो इंटरेस्ट रेट एग्रीकल्चर लोन पे मिलता है, एग्रीकल्चर लोन विल बी मैक्सिमम 9%. 9% के ऊपर नहीं जाता. तो लेट्स अज्यूम 9% बैंक ने हमें लोन इंटरेस्ट ऑफर किया था. सो वी विल अप्लाई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम and we will get a 3% subsidy on this part. अब क्या होगा, we will pay 9% to the bank and government हमें 3% रिटर्न करेगा on subsidy interest rate. and subsidy तो हमारा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया. अब अगर मैं ब्रेक इवन और फाइनेंस में हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है वो सब चीजों को कंसिडर करें. सो मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन. यूजुअली जो हमारे प्लांट्स रहते हैं, अगर मैं बेल पेपर की बात करूं
एक आइडियली जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नॉर्म्स भी है, सो वी कैन सेट अप मिनिमम 13,000 प्लांट्स, 13,000 plants in 1 acre. Okay, so 13,000 plants into, let's assume bell pepper ने हमें बस 3 ही किलो प्रोडक्शन दिया, हमारा एग्रोनॉमी नहीं चल पाया. Let's assume was to was, so we can understand the viability. Okay, 3 kilo production per plant and 13,000 plants we are placing, that is 39,000 kgs. Now इसका हम इसका हमने 10% मॉर्टेलिटी कंसिडर कर लिया. 39 टन हमारा प्रोडक्शन था, उसमें से 10% वी हैव कंसीडर्ड द मॉर्टेलिटी. सो लगभग 35 टन के आसपास का हमारा प्रोडक्शन आ जाता है. नाउ यू ऑल नो, लाइक जो मार्केटिंग प्राइस है, इट्स ऑलवेज ईयर राउंड 100 के ऊपर ही रहता है. अगर हम ईयर राउंड देखें, एवरेज निकाल के 100, 120, 150 के आसपास. बट इफ वी कंसिडर द सेल्स प्राइस ऑफ 80 रुपीज ऑल्सो, सो वी आर गेटिंग अराउंड 28 लाख का रेवेन्यू. ओके, एंड जिसमें से approx 14 to 15 lakh rupees will be your operational expense, जिसमें transportation, logistics, electricity cost, everything will be there. Okay, transportation cost, electricity cost, then we can say all the labor's cost, right? Agronomist salary, packaging cost, then depreciation cost of cocoa pit, क्योंकि somehow उसे कुछ time बाद we have to change it, right? So ये सब cost को भी sum up करके भी चले तो around 14-15 lakh का expense will be there, in which like around आप देख सकते हैं कि 28 lakh we have earned, जिसमें से 14 lakh और 15, let's assume 13 lakh will be our profit per cycle. अब हमारी एक साइकिल होती है 8 महीने की, राइट? 8 मंथ की हमारी एक साइकिल है. 8 मंथ की साइकिल में हम क्या करते हैं कि सपोज इनिशियल में तो हम आपको सैपलिंग्स हेल्प कर देते हैं, या फिर आप सैपलिंग्स परचेस कर सकते हैं. 8 महीने की साइकिल है और एक साल में हम 2 साइकिल ले पा रहे हैं. इसका रीजन बहुत सिंपल है. हम क्या करते हैं, जब हमारे स्लैब्स में एक प्लांट 8 मंथ का पहुंच जाएगा, तो हम तब उसको रिमूव करके नया सीडलिंग लगाने की जगह हम उसमें 2 मंथ ओल्ड प्लांटलेट लगा देंगे. तो हमारी स्लैब में जो साइकिल है वो 8-2 रहेगी, दैट इज अराउंड 6 मंथ. सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग 2 साइकिल्स. नाउ ऑन पेपर जो आपका ब्रेक इवन आएगा, इट विल अपीयर अराउंड लाइक 3.5 years, बट एग्रीकल्चर है, समहाउ हम थोड़ा 1-2 महीने का कभी कभी गैप ले लेते हैं. So considering that, 4 years will be your break even for 1 acre of fruity vegetable, considering bell pepper. Okay, so what we can understand with this is, अगर हम कंसिडर करते हैं कि 1 CR का कैपिटल हम somehow अरेंज करेंगे for 1 acre of land, considering that we have that kind of land with us, right? उस पॉइंट पे आफ्टर 4 years वी कैन सी कि हमारा जो 1 CR के अराउंड इन्वेस्टमेंट है, कंसिडरिंग कि 40 लाख तो गवर्नमेंट ने दे दिया, राइट? तो बचा हुआ जितना भी है, वी कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 4 years में हमें ब्रेक इवन हो जाएगा. आफ्टर 4 years वी कैन एक्सपेक्ट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट? राइट. अब जो मैंने ब्रेक इवन में जो कैलकुलेशंस लिए थे, आई हैवंट सिंपली कंसिडर्ड लाइक 26 लाख रुपीस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके. व्हाट आई हैव डिड कि लाइक वी हैव सब्ट्रैक्टेड ऑल द ऑपरेशनल कॉस्ट. ओके, क्योंकि जो ग्रोइंग कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बच रहा है, उसका ब्रेक इवन ड्यूरेशन, उस वैल्यू को सम अप करके ब्रेक इवन विल बी 3.5 to 4 years. ओके, तो In which we have एसेंशियली जो considered the EMIs प्रॉफिट and everything. एक्चुअली अर्न करेंगे, दैट विल बी आफ्टर 3 to 4 years, नॉट बिफोर दैट, राइट? Right. After 3 years, your break even and your everything is winded up. Now, whatever the revenue will be, it's pure profit. Whereas initial में हमें थोड़ा EMI, जो क्योंकि बैंक का लोन रहेगा, उसको क्लियर करना है. ये सब चीजों को अगर हम कंसिडर करें भी, सब EMI, VMI और सारा खर्चा हटा के, we will be having around let's say 15 lakh rupees per cycle profit. तो फर्स्ट 4 years हमारा कैश बर्न रहेगा बेसिकली, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट. Right. Because we have considered 85 rupees sales price, जो कि एक्चुअल में विंटर्स के प्राइस से भी कम है. बट कंसिडरिंग वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोस, अगर हम कितना भी वर्स्ट करें, इट विल टेक 4 years, not more than that. Because if we simply multiply if this, we are talking about crops, तो अभी हम जैसे बेल पेपर्स की बात कर रहे हैं. If we consider something like say आइसबर्ग लेटस हो गया, राइट, या फिर कैबेज या कॉलीफ्लावर हो गया,
तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में, या फिर बेल पेपर्स में वी हैव मोर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट? Right. A margin of profit will be definitely more in leafy crops, but demand थोड़ा segregated होने की वजह से first move हम leafy से ना करें तो better है, क्योंकि if we go for 1 acre of setup of leafy NFTs, we can have a planting capacity of around 88,000 plants in 1 acre, क्योंकि leafies will be cultivated on NFT, तो उनका spacing काफी कम रहता है. So अब 88,000 plants will be really difficult कि हम market को cater कर पाए, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है इनिशियल में, बट प्रॉफिट मार्जिन इज रियली हाई इन लीफी. सो अगर हमारे पास एक श्योर शॉट मार्केट है, एक परफेक्ट वेंडर्स है जो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या वी आर इन गुड बुक्स ऑफ दोस गाइज, सो एट दैट टाइम वी कैन प्लान फॉर दिस. Okay. So apart from this, you have so much of experience with hydroponics overall, right? And you must have catered a lot of people who are into this. Could you explain some sort of a strategy overall? Because overall अभी यहाँ around जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, 4 years for breaking even sounds a little bit longer than generally what we expect. It's not bad overall if you consider it a business, right? 4 years is not a bad time at all. But overall, in your experience, ऐसी कौन सी strategies हम adopt कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम इसको start कर सकते हैं, कैसा हमारा एक रोड मैप हो सकता है, so that we can shorten this duration overall, हमारा जिससे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हमें जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए, राइट? और हम इसको बेटर तरीके से कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इफ वी एक्चुअली वांट टू स्टार्ट इट? Sure, definitely. We'll be catering those all the parts. Also, Mr. Chandramani Kumar sir is along with me. He has joined the meeting. He is our director of Agrijoy, and he is working since the very first day of once the company was established. And he has faced lot of scenarios regarding all the kind of farm setups, all the ventures we have expanded. So I think it will be really great. Like sir will be helping with this answer. Definitely, like we can go with reducing the break even duration. All we need is to simply increase the sales price. 85 की जगह 90 and 100 rupees से if we work on marketing part, break even will be lowered down. And good evening, everyone. So I am Chandramani Kumar, and I'm the co-founder and director of Agrijoy Private Limited. Just wanted to know that is everyone comfortable in English, or someone need to switch over to the Hindi? So whatever will be comfortable, I'll keep my all conversation in that very simple language, so that we are here to have the general conversations, so that we can have the all clarity over the doubts. So can anyone please confirm me that which language will be more comfortable? Both will work. Okay, thank you. So I'll keep it mixed. So I think कि अभिजीत ने जो है इंट्रोड्यूस किया होगा फाइनेंशियल सीट वगैरह को. एंड अभिजीत, आपने प्रोजेक्ट कर दिया क्या फाइनेंशियल ROI सीट? No, not projected yet, sir. Okay, got it. So basically जो अभी क्वेश्चंस अभी आ रहा था कि जो 4 years ब्रेक इवन का लगता है वो प्रैक्टिकली ज्यादा लगता है. सो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट्स कभी भी डिपेंड करता है कि क्या एरिया को हम लेके चल रहे हैं, व्हाट आर द एरिया दैट वी हैव कंसीडर्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स, एंड किस एरिया को लेकर के हम आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर रहे हैं. लेट्स से अगर एयरलाइंस की बिजनेस है, अगर आप एयरलाइंस के बिजनेस में जा रहे हो और अगर आप 2 फ्लाइट लेके उतर गए ऑपरेशंस में, एंड इफ यू थिंक कि आप उससे जो है ROI मैच कर लेंगे, सो वो बिल्कुल हो नहीं सकता है. तो एक हमेशा एक वाइबल एरिया जरूर एक पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होता है, एंड इसकी वाइबल एरिया क्या हो सकता है जिससे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है. सो द वन थिंग इज दैट जब भी हम एक एग्रीकल्चर बिजनेस पे जाएं, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द वाइबल एरिया. नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज दैट सेकेंड वन इज दैट कि देखिए एग्रीजॉय को मैं देखूं या हम लोग जो है सिंपल मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर बिजनेस में हम लोग पॉली हाउसेस बनाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फार्म्स बनाते हैं, हमारे अपने भी फार्म्स है. वी स्टार्टेड विद 500 स्क्वायर मीटर, नाउ वी हैव 6 to 7 acres ऑफ द फार्म्स इन देहरादून उत्तराखंड दैट वी आर मैनेजिंग हियर. सो बेसिकली जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, हम लोगों के पास जब लोग आते हैं प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड व्हेनेवर वी टेक अ प्रोजेक्ट, तो आजकल एक जनरल सिनेरियो है कि कितना परसेंटेज बनेगा.
तो मीटिंग्स पे बैठने के साथ कभी कभी क्लाइंट मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितना परसेंट बनेगा। ये कितना परसेंट बनेगा, ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एक्सपर्ट के लिए ये आंसर करना बिल्कुल टफ है, क्योंकि ये कोई शेयर मार्केट नहीं है एग्रीकल्चर। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ एंड आई हैव डन माय फाइनेंस फ्रॉम IIM काशीपुर। सो मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज, एग्रीकल्चर नॉलेज है, बट प्रैक्टिकलिटी मैं जहां तक देखता हूँ कि कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज डिफाइन नहीं करता एग्रीकल्चर को। एंड अल्टीमेटली इट्स द कि कितना कंसस जो है उस पर्सन, कंससनेस उस पर्सन का है जो इस फार्म को लीड कर रहा है। Let's say if we are working on 1 acre of the farm, so there are factors that are, there are the fixed cost, there are fixed cost like जो पैसा आप लेबर के लिए दे रहे हो, सैलरी में दे रहे हो, you are paying to the farm managers, you are paying as an electricity bill, then there are various variable cost की जो आप न्यूट्रिशंस पे दे रहे हो। अब न्यूट्रिशंस वेस्टेज की जो मार्जिन है वो कितनी होगी, ये आपके कंससनेस पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने ग्राउंड टीम को कितना टाइट रखा हुआ है, राइट। सो द जो एक तो सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट। नाउ गोइंग विद द सीड्स अगेन, अगर ग्रोइंग सिनेरियो में ही आते हैं तो ग्रोइंग सिनेरियो में 2-3 चीज होता है जो सबस्ट्रेट पे आप ग्रोइंग कर रहे हो। लेट्स से अगर आप सॉइल पे कर रहे हो तो आपकी सबस्ट्रेट सॉइल है, आपकी सबस्ट्रेट FYM है। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स पे कर रहे हो तो कोकोपिट हो सकता है, NFT हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज दैट कि हमारी जो ग्रोइंग सबस्ट्रेट को स्टैब्लिश करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। सेकेंडली जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, जो न्यूट्रिशन है, सीड्स है, अगर सीडलिंग्स आपके वर्कर्स कर रहे हैं तो कितना वेस्टेज चला जा रहा है, द मार्जिन ऑफ एरर्स कितना ज्यादा है। सो अगेन वहां से आपका वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आपने सोइंग करे एंड देन अगेन सोइंग करने के बाद एक मार्जिनल ऑफ द सीड्स जो है वेस्टेज चला जा रहा है, एंड 2 महीने में आपको ट्रांसप्लांटेशन करना था, आपने वो वेस्ट कर दिया, फिर अगेन दूसरी बार फिर से सोइंग कर रहे हैं, फिर से प्लान कर रहे हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी चली गई तो वो उसकी वेस्टेज है। एंड अगेन वो कैपेक्स फिर लगेगा नए सीड्स खरीदने में। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ROI कभी भी कोई भी एक्सपर्ट्स या कोई भी एग्रीकल्चर कंपनी या कोई भी अपने एक्सपीरियंस पे, अपने बेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस पे, डाटा पे देता है। उसको इंश्योर करना, उसको अप ले जाना, ये काम ग्राउंड का होता है, जो पर्सन एक्चुअली एग्रीकल्चर में अपना फार्म चला रहा होता है। देहरादून में अगर मैं फार्म चला रहा हूँ सो दीज आर, मैं वहां पे आपको कैलकुलेशंस वहां से उसके अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। नाउ अगर आप मध्य प्रदेश में चला रहे हो, आंध्र प्रदेश में चला रहे हो, तो देयर विल बी वेरियस फैक्टर्स जो उसको डिफाइन करेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट पे, ऑपरेशनल कॉस्ट पे जितना ज्यादा आप कंट्रोल रखोगे, जो मार्जिन, जो आपके जो पैरामीटर्स ऑफ फार्म्स है जिसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे फार्म को खुलना 9 बजे है तो 9 बजे ही खुले, वॉट एवर द कंडीशंस इज। नवरात्रा आ गया तो आप सो गए, आपके फार्म्स नहीं खुल रहे हैं, तो अगेन उसकी इफेक्ट फार्म पे आनी है। दिवाली आया, आपकी इरिगेशन नहीं हो रही है तो इफेक्ट फार्म्स पे आनी ही है। लोग आपके 11 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी इरिगेशन कभी हो रहा है। सो द फार्म शुड बी डिसिप्लिन्ड व्हेनेवर वी आर गोइंग इनटू द कमर्शियल फार्मिंग। एक फिक्स पैरामीटर होना चाहिए। एंड ROI को इंश्योर करना कोई भी व्यक्ति का काम नहीं होता। वो जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पैरामीटर्स को समझे, उसके रिटर्न्स को कौन डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, और उसको इंश्योर करवाए। एंड अगेन कमिंग अप टू द पॉइंट, देयर आर फ्यू फैक्टर्स कि हम जो रिटर्न्स ले रहे हैं, लेट्स से अगर हम कैप्सिकम्स कर रहे हैं, सो हम उसको 80 से 90, 100, अगर हम 80 पे बेच रहे हैं, वी आर गेटिंग 30% ऑफ द ROI। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सर्च फॉर द बेटर मार्केट, वी कैन सर्च फॉर द बेटर प्लेस जहां पे हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। एंड उसको हम बेटर, अगर लेट्स से अगर मैं एक एक्सेल प्रेजेंट कराता हूँ, अभिजीत, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मीनवाइल आप एक एकड़ बिल पेपर्स का आप एक बार ROI शीट प्रेजेंट कीजिए, सो दैट की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं क्रिएट करता हूँ। सो अगर आप किसी क्रॉप को कर रहे हैं, अगर आपको 80 रुपीज अगर बेच रहे हैं, तो आपके 30%, 32% की अगर ROI दिख रही है, जैसे ही आपने उसको 100 रुपए पे बेचना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि तुरंत वो परसेंटेज ऑफ द रिटर्न्स वो बढ़ जाएगा, जो टेन्योर ऑफ द ROI है वो घट जाएगा। अगेन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो फिक्स्ड, जो वेरिएबल कॉस्ट है, उस पर जितना आपने कंट्रोल किया, वेस्टेज को मिनिमाइज किया, जो मोर्टिलिटी है उसको जितना मिनिमाइज किया, अपने आप ROI का जो टेन्योर है, वो जो ब्रेक इवन का जो टेन्योर है वो घट जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स प्रैक्टिकली जो मैं आपको आप तक लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में देखता हूँ कि जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस सब पे, कि इतने लगाओ इतना आ जाएगा, इतने लगाओ इतना आ जाएगा। ये आ तो जाएगा, पर ये लाएगा कौन? ये लाएगा वो जिसकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीजों को समझे और उसको इंश्योर करे।
जी, we are open for the next question, and I'd like to request Abhijit, can you please represent the financial seat of the one hectare? Sure, sir. मीनवाइल जब तक अभिजीत प्रेजेंट कर रहा है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं. Yes, CV, please. Hello, sir. Yes. Sir, I just want to ask that no doubt hydroponic is a future of farming. Like the day by day industrialization is expanding and the area is getting busier. No doubt hydroponic gonna lead. But I just want to ask that in India, basically, like in foreign countries, they don't have appropriate climatic conditions like we Indians have. So, what makes hydroponics farming have a good future than precision farming, or we can say traditional farming, to lead? I just want to ask that where hydroponic will lead, or you can say better than precision farming or traditional farming in future. So basically, CV, if I talk it very frankly, so there are few of the misconceptions that hydroponics में अगर कोई crop करेंगे तो comparatively ज़्यादा yield आएगा. So basically ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वैसे हम majorly hydroponics projects लगाते हैं और hydroponics projects भी execute कराते हैं, but हम soils के भी projects लगाते हैं. तो मैं उस दोनों basis को लेके कह रहा हूँ कि एक general perception होता है कि hydroponics का जब हम project लगाएंगे तो शायद वो ज़्यादा productions आएगा एंड वो ज्यादा रिटर्न्स की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, एक क्वेश्चन होता है. दूसरा जो है एक जनरल अगेन एक परसेप्शन होता है कि जो हाइड्रोपोनिक्स में अगर करेंगे तो वेट ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा रहेगा. सो एक दो चीज ये हो जाता है. सो मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्रॉपिंग करते हैं तो हम सिंजेंटा हो, रिजवान हो, क्लॉज हो, ये किसी भी एक वैरायटी के सीड्स अगर हम उठाए और हमने उसका जो है कल्टीवेशन कराया, बी इट द सॉइल, बी इट द हाइड्रोपोनिक्स, देखिए इल्ड जो है थियोरेटिकली तो वही आना है जो उस प्लांट्स और सीड्स की कैपेसिटी है, बिकॉज मीडियम ऑफ कल्टीवेशन चेंज करने से जेनेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स तो नहीं चेंज होना है, राइट. सो जो कल्टीवेशन जो प्रोडक्शन है वो तो सेम ही रहना है. अगर 3 kg ऑफ द बेल पेपर्स या कैप्सिकम्स या 3 kg ऑफ टोमेटो एक प्लांट से आना है तो वो सॉइल से भी उतना ही आना चाहिए और कोकोपिट से भी उतना ही आना चाहिए या हाइड्रोपोनिक्स के किसी मीडियम से उतना ही आना चाहिए. अब वेरिएशंस कहाँ है? अब आते हैं कि जब हम कमर्शियल एंगल्स पे करते हैं तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाता है, राइट. सो कमर्शियल लेवल पे जब हम करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगा, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारा जो टाइम लग रहा है और उसके बदले में अगर हम वो टाइम कहीं और लगा के कोई अर्निंग हमने की होती तो उतना टाइम जब हम लगा रहे हैं तो हमें उतना टाइम का रिटर्न्स भी मिले, साथ में हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उस रेशियो में रिटर्न्स मिले. सो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो ससेप्टेबल क्रॉप्स है, लेट्स से अगर आप कुकुम्बर करते हो तो आप पॉली हाउस के अंदर सॉइल पे बिल्कुल मैनेज कर सकते हो. आप वीड मैट का यूज कर लो, आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कर लो. सो प्रिसीजन फार्मिंग का यूज करके एंड आप अच्छे तरीके से क्रॉप उगा सकते हो. अगर आप जरबेरा कर रहे हो, आप क्राइसेंथेमम कर रहे हो, आप रोज फार्मिंग कर रहे हो, सो यू कैन गो विद द प्रिसीजन फार्मिंग एंड अंडर द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यू कैन ऑफ कोर्स डू अ बेटर प्रोडक्शन. देयर विल बी सम चैलेंजेस बट उसको कोप आउट किया जा सकता है इन फ्रस्ट्रेशंस को. बट इफ यू आर गोइंग विद सम नीश क्रॉप लाइक द लेटसेस, लाइक द लीफी वेजिटेबल्स, लाइक एक्सोटिक्स क्रॉप्स, सो एक्सोटिक्स क्रॉप्स में क्या हो जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहता है, आपका जो अपॉर्चुनिटी टाइम है वो ज्यादा रहता है. सो यू नेवर वांट कि किसी भी फैक्टर्स के कारण एक्सोटिक क्रॉप्स वैसे भी जो है थ्रिप्स, माइट्स, निमेटोड्स से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है. सो जब हम वैल्यूएबल क्रॉप्स में जाएंगे, टर्मेरिक्स में जाएंगे या ऑर्गेनो, थाइम, रोजमेरी या कलर कैप्सिकम्स देख लो, तो इन सब क्रॉप्स में हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी एन फैक्टर्स के वजह से हमारा इन्फेस्टेशन इतना हो जाए कि हम उसको कवर अप ही ना कर सके, हम उसको जो है एक्सपेक्टेड आरओआई को रीच ही ना कर सके. सो दीज आर द फैक्टर्स की जो हम हमेशा एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो हम हमेशा चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स किसी भी तरीके से हमारी क्रॉपिंग को, रिटर्न्स को किसी तरीके से वेरिएट नहीं करे. लेट्स से अगर एक क्रॉप को 3 किलो प्रोडक्शन देना है, अगर उसमें थ्रिप्स का अटैक्स हो गया, वायरस का अटैक्स हो गया एंड आपने 7 महीने में कैलकुलेट कर रखा है कि आपको 25 से 30 लाख आना है,
और किसी भी इन्फेस्टेशंस के कारण सॉइल बॉर्न डिजीजेस ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है एक्सोटिक क्रॉप्स को। सो आप चाहेंगे कि आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी फैक्टर्स के कारण वो प्रोडक्शन पर प्लांट ऑन एन एवरेज 700 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम आके ड्रॉप कर जाए। सो इसी केस में जो है हमारी हाइड्रोपोनिक्स की जो काफी सारी मीडियम है वो सुपीरियर हो जाती है, और आने वाले फ्यूचर में इसकी जो स्कोप ऑफ द एरियाज है फॉर द ग्रोथ वो वहां डेवलप करेगा कि जहां जहां वैल्यूएबल क्रॉप्स है वहां उन क्रॉप्स पे जिन पे जो डिपेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है। लेट्स से आपने कुछ क्रॉप्स उगाया और आपने आईटीसी से एक एमओयू साइन कर लिया, आपने जोमेटो से कर लिया, आपने हाइपर प्योर से कर दिया, एंड आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सप्लाई करना है। सो उस केस में अगर आप नहीं सप्लाई कर पाए तो आप पे लीगल भी चीज हो सकती है। तो यू विल वांट कि ऐसे कल्टीवेशंस पे करो जहां पे आपको एक फिक्स सिनेरियो का जो है विद द माइनर वेरिएशंस आपको प्रोडक्शंस आ जाए। अब उसको अचीव करने के लिए आपके पास वेज ये है कि आप नेचुरल फैक्टर्स को एलिमिनेट करें। तो आप क्या करेंगे, आप पॉली हाउस लगाएंगे, आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर सर्कुलेशन फैंस लगाएंगे, फॉगर्स लगाएंगे। अब आपके पास दूसरी चैलेंज है कि सॉइल किसी न किसी तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि सॉइल की जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जो इन्फ्रेस्टेशन है, वो आपके कंट्रोल में भी ना हो। सो एंड अगेन जो आपने कैलकुलेट करके रखा है, आपने कमिटमेंट्स करके रखा है, वो वेरिएट हो सकता है। सो माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ उसी पॉली हाउस में विड मैट बिछा के कोकोपिट पे सिस्टम पे किया जा सकता है क्रॉप। सो दीज आर द उसके अलावा जो है इन्फेस्टेशन कम आएगा तो आपको स्प्रेज भी कम स्प्रे करने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि फ्लोरिकल्चर्स हो गया, पॉली हाउस में डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग्स हो गए, या ओपन फार्मिंग्स में आजकल कितना ज्यादा जो है स्प्रे चलते हैं। ऑल्दो हम सब ऑर्गेनिक फार्मिंग रटते रहते हैं, बट कितने लोग हैं क्या बता सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या इतनी कैपेसिटी है कि क्या इस पूरे जो भारत की जो स्ट्रेंथ है क्या उसको फीड किया जा सकता है? क्या हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं एग्रीकल्चर में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही पूरा शिफ्ट कर गए? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो सीधा मतलब ये होता है कि आप कोई भी केमिकल्स का ड्रॉप्स ना यूज करो, आप ना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, ना आप केमिकल स्प्रेज यूज करो। बट क्या इस तरीके से प्रैक्टिकली क्या हम इतना सक्सेसफुल हो पाए? वे तो नाउ कमिंग अप टू द पॉइंट कि अगर इसको सम अप करूं तो हाइड्रोपोनिक्स का सबसे पहला एक बेनिफिशियर्स ये होगा कि जहां जहां पे जो लिमिटेशंस है, जहां पे हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मायने रखती है, जहां पे हमें कैलकुलेशंस मायने रखता है, तो वहां हम चाहेंगे कि वैल्यूएबल क्रॉप्स जो है उसमें इन्फेस्टेशंस कम आए एंड उसको हम अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। जिन क्रॉप्स में जरूरत नहीं है उन क्रॉप्स पे जानबूझ के इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, इन्फेस्टेशन कम होगा, तो जिन क्रॉप्स पे इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है तो इन्फेस्टेशन अगर हम कम कर पाए तो उस पे जो स्प्रेज है, केमिकल्स स्प्रेज है, हम उसको भी कम कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली जो है पेस्टिसाइड्स का जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है क्रॉप्स पे उसको भी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। सो देयर आर टू वेज to I mean the areas where the hydroponics farms or the hydroponic system will find better scope in future. Yes, Abhijit, are you ready with presentation? Yes, sir. Screen is shared. Okay. Thank you. So ROI पे चलते हैं। यस, तो मैं जो आपको बता रहा था एक बस एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे सो हमारा एक ये ROI है। देखिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में ऐसा है कि 13,000 प्लांटिंग कैपेसिटी जो है देना होता है, और हमने प्रैक्टिकलिटी भी देखा 13,000 प्लांटिंग कैपेसिटी देना होता है 1 एकड़ में, क्योंकि उनकी जो बेस्ट जो ROI जो सब्सिडी है वो अकॉर्डिंग टू द प्लांटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट होता है। अगर आपने 10,000 लगा लिया तो आपका सब्सिडी अमाउंट ही कम हो जाएगा। तो जब 1 एकड़ में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 13,000 प्लांट्स पे दे रहा है, तो आप क्यों जानबूझ के उसको 10,000 पे करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी सब्सिडी घट जाएगी। सो जब DPR फॉर्म करते हैं तो जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट होता है हम उसको उसमें इनपुट करते हैं, सो दैट कि हम बेस्ट कैलकुलेट कर पाए। एग्जांपल, 1,000 में अगर आप देखें कि नंबर ऑफ प्लांट्स पे अगर 2 रुपए अगर उन्होंने रेट्स दे रखा है सब्सिडी का, अगर आप 10,000 इंटू 2 करेंगे तो एक पार्टिकुलर अमाउंट बनेगा, 13,000 इंटू 2 करेंगे तो ज्यादा अमाउंट बनेगा।
तो अगर आप एक किसी पार्टिकुलर यूनिट पे अगर सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं तो आप मिनिमम तो उतना करेंगे जितना उन्होंने दे रखा है। अब आते हैं कि क्या उससे ज्यादा कर सकते हैं। उससे ज्यादा जो हमने फील किया है, क्योंकि हम 8-9 साल से हाइड्रोपोनिक सिस्टम में खुद का भी फार्म्स है हमारा, और हम ऑल ओवर इंडिया लगभग 40 से ज्यादा कमर्शियल फार्म्स बना चुके हैं इंडिया में। तो जो हमने अंडरस्टैंड किया है कि उससे ज्यादा जो है प्लांटिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही जो है ओवर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो एरिएशंस के लिए जो जगह बचेगा वो बहुत ही इनसफिशिएंट बचेगा, एंड वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह भी काफी कम हो जाएगा। सो उससे ज्यादा जाने का प्रैक्टिकल कोई नहीं हो सकता। सो हम 13,000 ही मान के चले तो ठीक है। और ये जो डाटा है, ये इनपुट से है, ये बहुत सारे रिसर्च के थ्रू आया है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है, काफी सारे डाटाज और वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो नंबर डिफाइन कर रखा है। तो 13,000 पे ही जाना चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकलिटी भी देखा है। जो मैं आप लोगों को शोकेस करना चाह रहा था कि ROI को, सॉरी, ब्रेक इवन को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो वही मैं बता रहा था कि पूरे फार्म्स में जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो थोड़ा सा जो फैक्टर्स होता है, जो माइन्यूट फैक्टर्स होता है, वो बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। इस केस में कंसिस्टेंस ऑफ प्रमोटर, कंसिस्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर या कंसिस्टेंस ऑफ फार्मर्स बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि एवरेज जो येलो किया गया है जिस लाइन को, अब देखिए कि 13,000 प्लांटिंग कैपेसिटी हमने लिया है ना एक यूनिट में। हम लोगों ने बेल पेपर्स को, ऑल्दो सिंजेंटा रिजवान हमेशा 6 kg 5.5 kg कहती है, बट हम लोग जो है एक क्रॉप साइकिल में हम लोगों ने 3 kg लिया है कैलकुलेशंस के लिए। हम लोगों ने प्लांट साइकिल 2 रखा है। उसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग सीडलिंग्स जो है हमेशा अपरूटिंग से पहले कर देते हैं। सो 8 महीने की साइकिल जो है वो 2 महीने जो सीडलिंग ग्रोथ की जो टेन्योर है वो हमें नहीं लगता है। सो प्रैक्टिकली हमें 6 महीने का ही साइकिल होता है, एंड अल्टीमेटली एक ईयर में जो है हम 6 महीने 2 साइकिल कर पाते हैं। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप अगर देखेंगे कि एवरेज सेल्स प्राइस हमने 85 रुपीज रखा है कलर्ड कैप्सिकम्स का, ये नॉर्मल कैप्सिकम्स की नहीं, ग्रीन कैप्सिकम्स की नहीं है। अब मार्केट में अभी भी रेट 150 से 200 के बीच में बल्क होलसेल में वेरिएट कर रही है कलर्ड कैप्सिकम्स की। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर हमने 85 रुपीज पे कैलकुलेट किया तो 59,67,000 आ रहा है। अब हम किसी तरीके से अगर हम 100 रुपये भी अगर इसको बेचे, कैन यू प्लीज एडिट इट। हमने बस 15 रुपए पर केजी मार्केट में कोशिश किया कि ज्यादा रेट मिल जाए, और हमारा 59 से रिटर्न्स जंप करके 70 लाख चला गया। अब ये इंश्योर करने का काम किसका है? ये काम है जिन्होंने फार्म पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने फार्म पे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। सो बेसिकली जो हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि ब्रेक इवन कितना इलोंगेट करेगा, कितना कम होगा, ये अगेन डिपेंड करता है कि कितना एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग हो रही है, कितना एफिशिएंट तरीके से एक एक पैरामीटर्स पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप देखिए कि मोर्टेलिटी रेट हमने 10% किया है, अब अगर मोर्टेलिटी रेट को 10 से उठा के हम 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, अचानक से ROI घट जाएगी। आप समझ रहे हो? सो बेसिकली हाँ, यहाँ इसको आप 30 करो, अब देखिए कि तुरंत घट गई। अब ये मोर्टेलिटी कैसे घट सकती है कि आपके वर्कर मतलब बढ़ सकती है, या अगर आपके वर्कर फार्म्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं ठीक से भेज रहे हैं, अगेन आपकी जो है लॉस परसेंटेज बढ़ जाएगी, मोर्टेलिटी परसेंटेज 30 हो गई, एंड आपकी जो ROI है वो ड्रॉप कर गई। सो छोटा छोटा फैक्टर्स को फार्म्स में ध्यान रखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, गाड़ी लेना एक अलग बात होता है, गाड़ी को मेंटेन कर पाना, उसकी मेंटेनेंस और उसकी पेट्रोल कॉस्ट को मेंटेन कर लेना, वो एक अलग बात होता है। सो दीज आर द थिंग्स की हाँ, मोर्टेलिटी क्या होता है कि वेस्टेज रेशियो, मोर्टेलिटी मतलब वेस्टेज, अगर आप मॉर्टल शब्द को जानते हैं। सो एग्रीकल्चर में मोर्टेलिटी रेट को रेफर करते हैं कि वेस्टेज रेशियो क्या है। तो अगर आप किसी भी पेरिसेबल फार्मिंग करते हैं क्रॉप्स का, सो उसमें मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा डिफाइन करती है कि आप अगर वो प्लांट 3 किलो आप मान के चल रहे हैं कि एक क्रॉप साइकिल में देगा, तो आप उसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो शायद आप नेगेटिव में, मतलब आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो आपने कैलकुलेट किया उससे नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारा प्रोड्यूस आप तोड़ेंगे और सबका सब A to Z फ्रेश तरीके से मार्केट में पहुंच जाएगा। देयर विल बी सम अमाउंट जो हार्वेस्टिंग में ही खराब हो जाए, देयर विल बी सम अमाउंट जो स्टोरेज में ही खराब हो जाए, देयर विल बी सम अमाउंट जो लॉजिस्टिक्स में या जब सप्लाई चेन में खराब हो जाए। अब इसको खराब करने के पीछे कारण क्या क्या है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा,
उसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा एज एन एंड ग्रोअर, एज अ फार्मर। सो ये सारा चीजें, सो वो हम वही दिखाना चाह रहे थे आपको कि हमने मॉर्टेलिटी को 10% रखा है, तो द रिटर्न इज 59,67,000। रेट्स को हमने 85 रुपीज रखा है, तो रिटर्न इज 59। जैसे ही हमने इसको 100 किया था, आपने देखा कि 70 के अप्रॉक्स पहुंच गया। सो थोड़ा सा डिफरेंस माइन्यूट चीजों पे सिंसियरिटी के तरीके से ध्यान देने से जो है चीजें बहुत अच्छे रिटर्न्स आती है और लाया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बट छोटे छोटे चीजों पे नेग्लिजेंस करने से आरओआई घट जाता है, और ब्रेक इवन का जो टेन्योर है वो 4 साल से 40 साल भी जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं है अगर हमने सिंसियरिटी से नहीं देखा तो। जी, नाउ अगेन आई एम ओपन फॉर some another questions if you have, because as per the Abhijit हम लोग completion time पे reach कर गए, so we'll be concluding it. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट ऑन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फार्मिंग्स पे अलग अलग हाइड्रोपोनिक्स पे अगर आप देखेंगे एज अ होल, तो हाइड्रोपोनिक्स कैटेगरी पे तो ऐसी कोई सब्सिडी नहीं है, बट इसके कंपोनेंट्स देखेंगे अगर आप एज अ बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो है लो डेट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराती है। सो वहां पे जो है एग्रीकल्चर एआईएफ स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, उसके थ्रू जो है डेट फैसिलिटी आप ले सकते हैं। इसमें 2 करोड़ तक का जो है कोलेटरल फ्री लोन होता है, एंड इसमें आपको 9% तक पे जो है लोन मिल जाता है। इसमें भी जो है 3% जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, 6% पे आपको 6% पर एनम ही पे करना होता है। सो एक अच्छी फैसिलिटी है कि शुरू में आपको इतना कैपेक्स कहाँ से मिलेगा बिजनेस खड़ा करने को, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू जो है आप एआईएफ स्कीम के थ्रू किसी भी बैंक से, हर एक बैंक में एग्रीकल्चर लोन लेने जाते हैं तो वहाँ एआईएफ स्कीम होता है, उसके थ्रू आप प्रोसेस करके 9% इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हैं लोन, एंड उस पर 3% की सब्सिडी मिल जाती है। सो आप किसी तरीके का एग्रीकल्चर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगेन अगर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में जाएंगे आप, तो पॉली हाउस पे सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन पे फैसिलिटी है, फेंसिंग पे है, बोरवेल पे है। सो अगर आप 1 एकड़ का प्रोजेक्ट अगर उठाते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स एज ए होल पे तो नहीं है, बट हाइड्रोपोनिक्स को आप स्टार्ट करने के लिए आप पॉली हाउस बनाएंगे, फेंसिंग बनाएंगे ही, बोरवेल तो लगाएंगे ही, ड्रिप्स तो लगाएंगे ही, ये सारा चीज, तो एज अ होल लगभग 1 एकड़ पे 35 लाख रुपए की सब्सिडी है। सो गवर्नमेंट भी काफी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 35 लाख जो है बिल्कुल वन टाइम सब्सिडी एक तरीके से आ जाता है। डेट फैसिलिटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तरह स्कीम के तहत है, जहाँ पे आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं 9% इंटरेस्ट पे, और ये आप पैरेलली दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। सो दीज आर द फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड इसको फैसिलिटेट हम जैसे कंपनी जो है इसको फैसिलिटेट भी कराती है। राइट, मैंने कुछ क्वेरी देखा है कमेंट में, आई थिंक अभिजीत, इज देयर एनी क्वेरी? कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है क्या? Just one question, sir. Eligibility criteria for AIF. That's it. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड इंडियन सिटीजन के साथ जो है आपके पास एक बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप कहीं से भी किसी भी एग्रीकल्चर कंपनीज इंस्टीट्यूशन से एक बेसिक ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर या तो फार्मर होगा चाहे स्टूडेंट होगा वही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सही देखेंगे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट तो जल्दी बिजनेस में आते ही नहीं, वो तो टेक्निकल जॉब्स में चले जाते हैं जनरली। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए या कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप छोटा मोटा ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, ये सारा चीज, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। नाउ अगेन आपको एक डीपीआर सबमिट करना पड़ेगा, एंड डीपीआर सबमिट करने में उसमें डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कौन से बिजनेस पे जा रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, कितना आरओआई आएगा। तो जो अभी हमने आपको फाइनेंशियल्स दिखाया उसी को लिटरेचर और कैलकुलेशंस में ये चार्टर अकाउंटेंट का काम होता है, वो सारा चीज कर देंगे। तो वो बाकी आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं तो उनके पास इन हाउस सारी फैसिलिटीज रहती है कि आपको डीपीआर प्रिपेयर करके देना, आपको एनएचबी में फाइल करा देना, ये सब कर देना। तो ये बाकी कुछ प्राइवेट फर्म्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि ये सारा चीज करके देना। बेसिक क्राइटेरिया ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको किसी तरीके से हिंड्रेंस हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। जी अभिजीत, क्या आप मेरे लिए क्वेश्चंस को रीड आउट कर देंगे क्या कमेंट से? Sure, sir. One more question is there regarding the solar panel. How much will be the investment for integrating solar on in hydroponics or in polyhouse?
सो अगर आप 1 एकड़ के फार्म को चलाना चाहते हैं, अगर फ्रूटी वेजिटेबल्स है, तो लोड कैपेसिटी आपका नियर अबाउट 8 किलोवाट से 9 किलोवाट का लोड कैपेसिटी रहेगा इन टोटल। एयर सर्कुलेशन फैंस, एग्जॉस्ट, फर्टिगेशन यूनिट और अपनी मोटर्स वगैरह लगा के तो 8 किलोवाट से 9 किलोवाट तक रहेगा। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स कर रहे हैं तो वहीं पे लोड कैपेसिटी आपकी 20 किलोवाट तक चली जाएगी। सो अगर आप फ्रूटी वेजिटेबल्स पे देख रहे हैं तो 9 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का लोड को जनरेट करने में लगभग आपको आधे एकड़ में जो है अपनी जो है सोलर पैनल्स वगैरह स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। एंड इसकी जो कॉस्ट है लगभग आपको सब्सिडी, वैसे 5 किलोवाट तक की जो सब्सिडी है, 5 किलोवाट तक का जो लगता है पैनल्स, उसमें तो सब्सिडी चल रही है। पर 25 किलोवाट तक का जो स्टैब्लिश किया जाना रहता है उसमें शायद सब्सिडी अभी उतना फ्रिक्वेंट आ नहीं रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा अगर पर्टिकुलरली सोलर पावर में देखें तो। सो लगभग आप समझिए कि 30 लाख 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जाएगा। साथ में लैंड की जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जाएगी, क्योंकि किसी भी जमीन पे तो आप उसको लगाएंगे ही ना पॉली हाउस में। सो एक जमीन का इन्वेस्टमेंट जाएगा प्लस सोलर पैनल्स पे जाएगा। सो अगर आप हमारा एक्सपीरियंस मानिए तो सोलर पावर्स को लगाने का कोई कुछ खास जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट खुद भी एग्रीकल्चर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। और हाइड्रोपोनिक्स का ये मतलब नहीं है कि दिन भर बिजली चलते ही रहना है। बिजली जो चलता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलता है, कि सुबह में इरिगेशन होना है, दोपहर में इरिगेशन होना है, शाम में इरिगेशन होना है। अगर कोकोपीट में आप कर रहे हैं तो क्योंकि फ्रूटी वेजिटेबल्स है, कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड कर लेता है और फिर वो पूरा दिन भर भी वो होल्ड करके रख सकता है। अगर लीफी वेजिटेबल्स है तो उसमें भी एक मिनिमम पानी हमेशा स्टैग्नेंट रहता है नीचे में। एरोपोनिक्स टावर्स वगैरह का एक अलग केस है, बट एरोपोनिक्स टावर इंडिया में वाइबल ही नहीं। सो एरोपोनिक्स टावर्स ट्यूबर वगैरह क्रॉप्स के लिए तो ठीक है, बट मैक्सिमम क्रॉप्स के लिए उतना ज्यादा वाइबल नहीं। सो बेसिकली कोई भी सिस्टम लगेगा तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स जब लगेगा तो उसकी फर्टिगेशन टेन्योर जो है, कितने घंटे तक उसको फर्टिगेशन देना है, वो डिसाइड रहता है। सो सोलर पावर लगाना उतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग वाइबल नहीं है, अनटिल अनलेस आपको कहीं से फ्री में मिल रहा हो या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा हो। अगर आपको एज अ प्रोजेक्ट बेसिस पे उसको लगाना है तो प्रोजेक्ट ही आरओआई और ब्रेक इवन पार्ट अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप खामा खा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के उस एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उसकी आरओआई को आप इफेक्ट करेंगे और उसके ब्रेक इवन, क्योंकि एक जमीन आपको उसमें देना पड़ेगा। लगभग 1 एकड़ का फार्म चलाने के लिए आधे एकड़ का जमीन चला जाता है सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश करने में। 35 से 40 लाख तक चला जाता है। अगेन मेंटेनेंस है, एंड 100% आप डिपेंडेंट सोलर पे रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि मौसम के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन जो कैपेसिटी है वो भी ड्रॉप करता है। सो एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक भारी भरकम सा प्रोजेक्ट बना ले, कि क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट के लिए तो बन नहीं रहा, आप अपने आरओआई के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो। सो जरूरी नहीं है सोलर पावर लगाना, ये हमारा सजेशन रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद भी एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर सप्लाई देती है, एग्रीकल्चर सब्सिडाइज रेट देती है, तो जरूरी नहीं है इस पे कुछ अलग सा जानबूझ के इन्वेस्टमेंट करना। Hello, one more question Shivi has, that is like, is hydroponics profitable in India based on our experience? So like, I think sir has already answered this. Definitely it's a profitable one. Also sir, you can go for the add-ons. Hello. So, Yes, Abhinav. sir, do you provide on-farm Sorry, training? Abhinav, your voice is really low. So, am I audible right now? Yeah. So, do you provide on-farm training regarding hydroponics? Yes, definitely. And how can one approach you regarding that? Okay, you can simply DM us on our Instagrams or on our website also. You can And- reach agrijoy.in. You can reach www.agrijoy.in, or you can reach AgriUA also. You can reach to the AgriUA as well, and they can reach us back. So it can be done. Yeah. In fact, for your reference, I have pasted our website in a chat, so you can simply go through that. Okay, sir. Thank you. Hi, Both the actually, I websites in have the two chat. questions. Hello. Yes, go ahead.
एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज कि सोलर ड्राइड सक्सेसफुल है क्या जीरो वेस्टेज के लिए? सोलर ड्राइड? यस, सोलर ड्राइड वेजिटेबल्स। यस, सक्सेसफुल है, काफी ज्यादा है। अगर आप फ्री ट्रेड एसोसिएशंस वाली कंट्रीज को टारगेट करते हैं, बट अगेन मैंने जो शुरू में आपको ये कहा था, जो ज्वाइन करने के साथ ही, कि हमें हमेशा वॉल्यूम्स पे जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम उसको मार्केट पे ले जा रहे हैं। तो हमारे पास एक जो वाइबल जो अमाउंट होती है, जो एरिया है, जो कल्टीवेशन एरिया एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड फर्दर प्रोसेसिंग एंड गेटिंग इट टू द मार्केट, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बहुत बड़ा मैटर करेगा। ओके, और ये आप क्योंकि कह रहे थे अगर कि आप एरोफोनिक्स में कुछ क्रॉप वाइबल नहीं है। हाँ, इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एरोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स का ही एक जो है सब टाइप है। एंड इसमें क्या होता है कि आपने वर्टिकल टावर देखा होगा, इसमें एक ऊपर से या नीचे से पानी जो है फ्लो किया जाता है एंड अल्टीमेटली ये नीचे चला जाता है। सो होल्डिंग कैपेसिटी कहीं भी नहीं रहता है, मतलब आप कोई भी ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी हो। सो अगर आप यूरोपियन स्टेट्स में देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे, तो वहां तो ये स्ट्रॉबेरीज पे, हर्ब्स पे चला जाता है, सक्सेसफुल हो सकता है। कारण वहां पे फ्रीजिंग टेम्परेचर भी होता है। तो पानी अगर पाइप्स में अगर रुक गए, तो जब फ्रीज हो जाएगा तो वहां पे वो उसको जो है रप्चर कर सकता है। एंड वहाँ की क्लाइमेटिक जो है कंडीशंस थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इतना गर्मी नहीं होता है। तो वहां पे हर्ब्स वगैरह के लिए यूरोप में ये काफी सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर वहां पे जैसे कि मॉलडीव्स वगैरह में अगर आप देख लो, जहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चीप है। बट इंडिया में अगर आप देखो तो टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएटिंग है, काफी हाई है। सो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी काफी रहता है मोस्ट ऑफ द, अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखो तो वहां पे गर्मी ज्यादा रहता है। अब इसमें अगर आपने पेरिसेबल हर्ब्स लगा लिया, क्रॉप लेटसेस लगा लिए, उग तो जाएगा, बट जो रनिंग टाइम ऑफ द जो मोटर्स होगी वो काफी ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पानी अगर होल्ड नहीं करेगा, तो आप जानते हो कि यहाँ गर्मी इतनी रहती है, ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट करता है। सो वहां पे जो है उसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा पानी। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि पत्ते अगर आपने बंद कर दिया, गर्मी है, तो स्ट्रेस में जाएगा। अगर आप देख लो ना, 10 बजे के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हालत क्या हो जाता है, धूप उग जाता है। एंड धूप के उगने के साथ ही जो है टेम्परेचर काफी हाई हो जाती है। एंड अल्टीमेटली आपको मोटर्स चलाने पड़ेंगे ताकि पत्ते स्ट्रेस में नहीं जाए, रूट्स स्ट्रेस में नहीं जाए। सो वाइबिलिटी जो है इकोनॉमिकली नहीं बैठता है, प्रैक्टिकली बैठ सकता है। अगर आपने पूरा मोटर चला दिया, आपने फैन पैड सिस्टम लगा दिया, ये सारा, तो इसके दूसरे ऑप्शंस है, एनएफटी सिस्टम्स है। एनएफटी में एक मिनिमम लेवल ऑफ वाटर हमेशा रुका रहता है। एंड अल्टीमेटली जो पत्तेदार सब्जी है, क्या होता है कि दोपहर के बाद, शाम के बाद जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है, वो ऑटोमेटिकली रिकवर करने लगते हैं। एंड जो है हमें पूरे दिन भर पानी चलाने का जरूरत नहीं है। सो प्रैक्टिकली जो है इकोनॉमिकली वो वाइबल नहीं होता है एरोपोनिक्स टावर सिस्टम। एज अ होल बहुत अच्छी है, बट इंडिया में वो नहीं चल सकता है। ओके, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। इसमें लेकिन एक ऑटो टाइमर में भी हम प्रैक्टिकल करके कुछ ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि ये वाइबल थोड़ा रहे, लीफी में नहीं तो कुछ कुछ क्रॉप्स में, जैसे टोमेटो, कुकुम्बर्स, कैप्सिकम्स, कॉलीफ्लावर्स। मैं आपको बता देता हूँ कि टोमेटो हो गया, कुकुम्बर्स हो गया, फ्रूटी वेजिटेबल्स हो गया, इसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। ये ना बेल वाले पेड़ हैं, मतलब क्लाइंबर्स है। अगर मैं कहूँ तो वाइन्स क्रॉप है, अगर अलग अलग वर्ड में मैंने समझाया है। अगर आप एग्रोनॉमिकली समझे तो वाइन्स क्रॉप कहते हैं, नॉर्मली इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। सो इसको सपोर्ट चाहिए, इसके जो रूट्स है, इनको होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए। सो अगर आप इसमें करते हो तो उसको ट्रेसिंग करना, ये सब देखिए, आप पिक्चर्स आप देखिए कि इसको ऊपर से धागे चाहिए, बिल्कुल इंडियन तरीके से इसको करना पड़ेगा। अब जब हम ये ऐसा कर रहे हैं तो ऑटो टाइमर लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऑटो टाइमर लगाने से सिर्फ इतना होगा कि हम जब चाह रहे हैं तभी वाटर जाएगा, और वाटर तो अल्टीमेटली देना पड़ेगा ना। अगर आपके पानी जड़ में ठहर ही नहीं रहे, आपके वाटर निकल जा रहा है नीचे से, और जब गर्मी ऊपर बढ़ रहा है तो उसको तो पानी देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारे भी जो फार्म्स है वो ऑटोमेटिक ही चलते हैं। ये फार्म्स जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये सारे आईओटी पैनल्स पे इंटीग्रेटेड है। ये मुझे लगता है अभिजीत, अगर आप दिखा पाए आईओटी पैनल्स तो
ठीक होगा। सो हमारे भी फार्म्स पे IoT इंटीग्रेटेड है, पैनल्स इंटीग्रेटेड है, ये सारे सेंसर्स से चलते हैं, बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि पानी नीचे निकल जाता है एंड अल्टीमेटली जो है पानी की होल्डिंग नहीं रहने के कारण क्रॉप्स स्ट्रेस में जा सकते हैं। सो इंडिया जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहाँ टेम्परेचर सुबह शाम फ्लक्चुएट करता है और गर्मी ज्यादातर रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइबिलिटी इसकी घट जाती है। सो इससे बेटर ये है कि हम ऐसा सिस्टम यूज करें जो बेसिकली वाटर को होल्ड कर पाए, पानी को अपने में होल्ड कर पाए। तो कोकोपिट मीडियम वहां पे यूज कर लिया जाता है। NFT सिस्टम्स लीफी के लिए यूज कर लिया जाता है, जहां पे NFT में नीचे जो न्यूट्रिएंट फिलिंग टेक्निक कहते हैं, जहां पे एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लास्टिक की फ्रेम रहती है, वहां पे नीचे वाटर मिनिमम स्टोर हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो जब भी स्ट्रेस में जाएगा, तो आप जानते हैं एग्रोनॉमिकली जब बाहर की जब ह्यूमिडिटी घटेगी तो प्लांट्स के लीफ से ह्यूमिडिटी लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारे अपने शरीर पे भी ऐसा ही होता है, जब गर्मी बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी ड्रॉप होता है, तो हमें पसीना निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है बॉडी। और सेम केस चला जाता है प्लांट्स में भी कि इवापोट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो उस केस में क्या होगा कि आप जो है अगर पानी नहीं रहेगा तो बेस में, तो वो स्ट्रेस में जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए आप पानी चलाएंगे, और कितना देर चलाएंगे, काफी देर चलाएंगे, एंड दैट्स व्हाई उसकी जो वाइबिलिटीज पे जो है क्वेश्चन आ जाता है। यस वर्मा। अभिजीत, अगर आप ऑटोमेशन दिखा पाए तो बेटर होगा जी। सो ये किसान सॉल्यूशंस जो है एग्रीजॉय की सिस्टर कंपनी है, एंड हम लोग जो है अपना ऑटोमेशन वगैरह से करते हैं। सो ये पहला ऑटोमेशन है जो बिल्कुल पॉली हाउस में जितने भी क्लाइमेटिक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स है, जो एयर सर्कुलेशन फैंस है, जो एग्जॉस्ट है, जो ह्यूमिडिटी है, इसमें सेंसर्स इंटीग्रेटेड होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के। सो इसको हम मैनुअल और जो है ऑटोमेटेड मोड पे डाल सकते हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर हाई जाता है तो ऑटोमेटिक जो है सारे फैंस ऑन हो जाते हैं, फॉगर्स ऑन हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी जब ड्रॉप करता है तो सारे फॉगर्स ऑन हो जाते हैं। सो ऑटोमेटिक IoT पैनल से चलते हैं। अब आगे चलते हैं, फर्टिगेशन ऑटोमेशन दिखाइए इफ वी कैन। सर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स, थोड़ा नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, जब आपने शेयर कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं। सो आपने देखा होगा, जब अभिजीत ने दिखाया होगा, तो फर्टिगेशन और ऑटोमेशन, सो उसमें भी सारे टाइमर्स रहते हैं। सो टाइमर्स की इशू नहीं, इशू ये है कि प्रैक्टिकली जो है जो बेसिक दिक्कत है कि पानी होल्ड होना चाहिए, उसकी दिक्कत है। तो हम जानबूझ के क्यों ऐसी सिस्टम को यूज करें जिसपे हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा मोटर चलाना पड़ रहा है पानी, क्योंकि मोटर चलाना में मोटर की भी बियरिंग टीयरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है खर्च होता है, और इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा तो पैसा खर्च होगा एंड अल्टीमेटली वाइबल इकोनॉमिकली नहीं रहेगा। सो ये बात है। ये आगे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। So if we don't have any more questions, we would like to move towards the conclusion of this webinar. If there is any more question, you can just quickly ask in the next like 10 seconds or something. So sir, looks like there are no more questions as of now. And on behalf of Agribusiness, I thank you and Mr. Abhijit for all your time and all your patience with the questions and with the presentation and everything. And I actually saw a lot of value from you guys. And I hope that all the students who were here, be it students or individuals who were here, they learned a lot from this. With that, I would like to conclude this webinar. In the end, I would just like to convey to everyone who is present right now, if you liked the webinar, please share your feedback with us. With that, this workshop will continue tomorrow as well as the day after tomorrow with other agendas that we have. So if you liked what you saw today, you should definitely join tomorrow as well. And you can share this with your friends who can join in tomorrow and day after tomorrow. And definitely we can welcome more and more people who want to learn from this. Thank you so much for this, and have a Thank you good so much evening. everyone for coming. Have a great day, guys.
Thank you so much, sir.